माननीय उपसभापति जी, I rise to move that the bills of lading Bill 2024 to make provision for the transfer of right of the suit and all liabilities to the consignee named in a bill of lading and every endorsee of bill of lading to whom the property in the goods mentioned in the bill of lading shall pass upon or by reason of a consignment or an endorsement, and for matters connected therewith or related thereto be taken into consideration. बिल के बारे में बोलना चाहेंगे? आप कुछ बिल के ऊपर कुछ पॉइंट्स मुद्दे रखना चाहेंगे मंत्री जी? Okay. Respected Sir, today we are bringing a bill which is very much important for our shipping sector, particularly to enhance the trading and commercial activities, and also to have better understanding of a bill. That is why let me take this opportunity to enlighten the august House about the bill of lading Bill 2024 being taken into consideration. The bill of lading Bill 2024 seeks to replace the pre-constitutional Indian Bill of Lading Act 1856. The Indian Bill of Lading Act 1856 provides for the transfer of right of suit and all liabilities to the consignee named in a bill of lading and every endorsee of a bill of lading to whom the property in the goods mentioned in the bill of lading shall pass upon and by reason of a consignment or an endorsement. The said Act deals with specific aspect of right and liabilities emanating from the transfer of bill of lading to a consignee or an endorsee. Sir, the bill of lading is a legal document, but not a contract. It is only evidence of a contract. The right and liabilities provided for under this law are not directly emanating from the contract, but from the transfer of the evidence of contract, that is, the bill of lading. The repeal and reenactment of this pre-constitutional law would serve two important purposes. This is very important, sir. Firstly, as an independent, democratic, modern nation, in the 76 years of having become a republic, and also the fastest growing major economy of the world, it is essential that our laws reflect our distinct identity, asmita, desh ki asmita, man swabhiman, without remaining stuck in archaic colonial mindset. In line with the government initiative to do away with pre-constitutional law, more than 1,500 such colonial era legislation already stand repealed. This law was also examined elaborately to assess the need for its repeal. It was concluded through extensive stakeholder consultation that the legislation is highly relevant for India's maritime trade. In the Bill of Lading Bill 2024, a new provision which empowers the central government to issue direction for carrying out the provision of the bill has been incorporated to ensure that the provisions are easily implemented. Further, the repeal and saving clause added in the bill while repealing the 1856 Act will also ensure that any action taken in line with the provisions of the repeal statute are legitimized as long as they are not in contraventions of the provisions of the new law. Hence, it is being introduced
as a new legislation incorporating standard provision found in all modern laws drafted in India. This would serve the important purpose of ensuring effective and smooth implementation of the new law, enable ease of understanding, and also facilitate ease of doing business in the contemporary global maritime sector. Since the essence and spirit of the new legislation being considered today remain unaltered, I would not like to elaborate further and would request the August House to consider and pass the Bill of Lading Bill 2024. Thank you, sir. शहीद जी, माननीय सदस्य श्री मोहम्मद हमीदुल्लाह शहीद जी. Thank you, sir, for giving me an opportunity at the outset. I would like to thank my party, the Indian National Congress Party, and my leader of opposition, Shri Rahul Gandhi ji, for providing me an opportunity to express my views and articulate on the Carriage of Goods Bill 2024. I would also like to thank you, sir, for allowing me to speak on this bill. This bill has great ramifications and consequences on Lakshadweep, my constituency, because unlike any other state and union territory in the country, this bill directly affects Lakshadweep. Most of the goods of transportation are done from the mainland. It is imported from the mainland to Lakshadweep, and as far as Calicut, Bepur port and Mangalore port are the two major ports from where the goods are transported to Lakshadweep, whether it is public distribution system, essential commodities, essential items, construction items, materials, all of that. I would like to also mention here that in our territory there are no railways or roadways. We are totally relying on shipping. Shipping is the lifeline for us. In the passenger ships, we are transporting the goods along with passengers, and there are exclusive barges which are transporting the goods from the mainland to the islands. Sir, Lakshadweep is a scheduled tribe area under Schedule 5 of the Constitution of India. It has been granted the status of scheduled tribe because of the social and economic backwardness and geographical isolation from the mainland. Sir, my point is, when these passenger ships and exclusive barges have been earmarked for transporting, why all the ships are not plying at the moment? There are 5 ships which have been under the possession and ownership of Lakshadweep administration, and being a union territory, it is directly under the central government. तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी थोड़ा सा आप देश के स्वाभिमान और देश की अस्मिता की बात कर रहे थे. कैलिकट पोर्ट में पिछले 4 साल से कार्गो मूवमेंट बंद करके रखा हुआ है. जब से कोविड हुआ है उसके बाद, कोविड के बाद से अब तक शुरू नहीं किया गया है. तो क्या मैं आपका ध्यान चेयरमैन सर आपके माध्यम से मंत्री जी का आकर्षण करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने स्वाभिमान और अस्मिता की बात की, तो थोड़ा सा हमारा भी स्वाभिमान और अस्मिता अगर बढ़ा देंगे तो बड़ी कृपा होगी मंत्री जी की. और उसके अलावा सर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 5 शिप में से अभी सिर्फ 1 शिप चल रहा है. 4 शिप ड्राई डॉक में डाला हुआ है, मेंटेनेंस कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं. सालों साल पड़ा हुआ है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है. हमारा बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का और पैसेंजर का शिप है. तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, दरखास्त करता हूं कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि इनके मिनिस्ट्री के अंडर आता है, पहले सारे शिप को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया, वो चला नहीं पाए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वापस दे दिया. कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ पहले हमारा एक एग्रीमेंट था जिसके तहत सारे शिप्स को टाइमली मेंटेनेंस करना, ड्राई डॉकिंग करना, सर्वे करना, ये सब इस बिल से जुड़ा हुआ है सर, क्योंकि हमारे पैसेंजर शिप में गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो इसीलिए मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑनरेबल मिनिस्टर जो है अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जैसे कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, इसमें आप अपना ध्यान लगा के थोड़ा सा आपने एज अ मिनिस्टर आप उनको डायरेक्शन दीजिए, CSL के चेयरमैन को, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन को,
पोर्ट डिपार्टमेंट को कि ये कोऑर्डिनेट करके लोगों को ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दोनों में आप मेहनत करिए, क्योंकि आपने कहा कि आपका एजेंडा है, आपका ऑब्जेक्टिव है ईज ऑफ बिजनेस एंड ईज ऑफ दिस थिंग। तो ये ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए और ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि यू हैव a very convenient mode of transportation. Unless you do that, it is very difficult to have ease of business, or you can't have commercial or trading activities. Sir, the objective of this bill is to regulate the carriage of goods from any port in India to any other port in India, or any port in India to any port overseas. इंडिया से किसी और इंडिया से दूसरे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाने के लिए, इंडिया के एक पोर्ट से विदेश में किसी पोर्ट में जाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए इस कैरेज ऑफ बिल को लाया गया है। ये बताया गया था कि 1854 के कानून को, जो कि ब्रिटिश के ज़माने में बनाया गया था, उसके बाद 1925 में भी एक कानून बनाया है, जिसके बाद विस्पी रूल्स बनाया था नॉर्वेजियन, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में और कार्गोस और इसके मूवमेंट में जो स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क है जिनका, तो उन्होंने इसको किया था। उसमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कैरियर पर्सपेक्टिव्स के माध्यम से, ट्रांसपोर्टर्स पर्सपेक्टिव, all of this is regulated, and we follow the international convention, the Hague Convention of 1922, which was amended again in 1978, which was called the Visby Rules and the Hague Rules. It's also called the Hague Rules. So my humble suggestion to the minister and to the honorable minister and to the government through you, sir, is that kindly ensure that to do ease of business, to have commercial and trading activity, you kindly ensure that there is passenger movement and cargo movement and running of the ships important. आप शिप को बांध के रखेंगे बिना चलाए, वो भी सरकार के ऊपर, it is like a expense and a expenditure on the government. आप उसको चलाएंगे तो जो क्रू को सैलरी मिल रहा है, जो चलेगा तो और अच्छा है, because you will be able to generate some revenue out of it. You are just tied up these ships, it is not running, so it is making it is basically a white elephant for the government. Therefore, sir, I would request you, through you, that this ease of doing business and commercial and trading activity can only be boosted, and commercial activity can only be motivated by making more of transportational facility to the islanders. And मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंगलोर पोर्ट में there was a proposal to have a bigger port, so that port is also coming directly under the minister. This is incidental to this bill, sir. Unless you have a good port, you will not be able to transport goods, and the carriage of goods will be difficult. Bepur port band pada hua hai. I request you to kindly take it up with the Lakshadweep administration and request a proposal from their side to ensure that जो सदियों से चला रहा था उसको बंद कर रखा है, उसको वापस से चालू करें, उसको वापस से शुरू करें, ताकि लोगों को इससे आसानी हो, लोगों की परेशानी दूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और आपने मुझे मौका दिया बोलने का, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री विभू प्रसाद तराई जी। Thank you, Honorable Speaker, sir, giving me the opportunity to speak in the August House relating to this Leading Bill 2024, which was introduced in the Lok Sabha in August 9, 2024, seeks to replace the Indian Bill of Lading Act 1856. The bill provides a legal framework for issuance of Bill of Lading. To simplify, quote, this is a bill which refers to document issued by a freight carrier to a shipper. The bill contains details such as type, quality, condition and destination of goods being carried. The Act states that a bill of lading is conclusive evidence of goods on board. It grants of all rights of suit and liabilities regarding the goods by the receiver as per the bill of lading, or
any third party to whom the receiver may transfer ownership of goods. The bill retains all provisions under the Act. The bill adds that the central government may issue directions for carrying out the provisions of the bill. Further, this is a legal document issued by a carrier to a shipper detailing the specific of goods being shipped, essentially acting as a proof of shipment and the receipts for the cargo, and is a crucial for international trade in India, where a significant percentage of cargo is shipped overseas. Using this document, however, precise data on the exact percentage of cargo shipments in India solely relying on bills of lading is not readily available. So, the Lading Act 1856, which is going to be amended relating to this bill only to transferring of all rights in respect of the central a contract contained in the bill of lading along with the property to the consign or endorse of the bill of lading, ensuring that transferred bill of lading in the hands of a bona fide holder to be treated as a conclusive evidence of the goods being laden on board. So, though the substantive aspects of the said Act continue to remain relevant, being a pre-independent statute, it is imperative that the provisions of the said Act require to be revised without changing the substance or spirit of the said Act, so as to bring in line with modern legislation in order to facilitate simplification and ease of understanding. Further, a new provision is proposed to be incorporated in empower the central government to issue directions to carry out the provisions of the proposed legislation. So, in the context of what incident had happened in Odisha, in Paradip port in 2009, one Mongolian vessel, MV Black Rose, carrying a cargo of 20,847 metric tons of iron ore and 920 metric tons of furnace oil, sank near Paradip port, Odisha, under mysterious circumstances. Actually, it was engaged in illegal transportation with false documents. Actually, who was the owner? Till today, it was not known to the government till today. It was happened when Congress was ruling the country. At that time, I was the MP of that constituency, Jagatsinghpur MP constituency. Yes. At that time, when this incident happened, at that time, that government of Congress could not trace out the owner of the ship, and till today, it is under the investigation. That's why this lading bill is required, because we know now our government of India, under the efficient leadership of our beloved Prime Minister Narendra Modi ji and Shipping Minister Sarbanand Sonal ji, actually they have taken so many steps to carry out the business relating to sea. Yes. So, in this context, I would like to mention here that Odisha is enriched with so many minerals, like iron ore, manganese, coal, and so many minerals are there. And our coastline is around 480 kilometers from Ganjam to Baleshwar. So many
ports have been established, like Paradip, Gopalpur, and Dhamra ports are there. So it is also the planning of our government of India. It is the planning of our Honorable Shipping Minister and beloved Prime Minister. So many ports will be established, not only all over India, in our states also. Yes. So by the government and by the PPP mode of investment, so many ports are going to be established in Odisha. In this context, I would like to say that this is just to reiterate this House that India has a fleet strength of 1,526 vessels with 13.75 million gross tonnage in 2023. During last 1 year, 6 vessels has been added to the fleet. Available data points to the fact that approximately 95% of India's total cargo is transported by sea, meaning that vast majority of cargo shipments in India are done via maritime transport. This translates to around 95% of the country's exim merchandise trade by volume being moved by sea. So, in this context, I would like to say, by this act, which our government has decided to enhance the business by sea route, so it can strengthen our economy. That now, what relating to the strengthening our economy in 2027, our beloved Prime Minister there is a target that around more than 5 trillion core economy will be there. Now we have already reached in 4.4 million dollar is there. So that's why when we are going to become the third largest economy in 2027, in this context, the business relating to sea route, so in which way our government has taken steps, efficient steps, so that in future our country will become a developed nation in 2047. It is a step taken by the central government. That's why, yes, again, I would like to reiterate that our beloved Prime Minister and our Shipping Minister, in which way they have taken this bill so that it will enhance our and strengthen our economy in future. Thank you. Thank you, Honourable Member. Honourable Member, Srimati Pratima Mandalji. दोबारा बुलाइए. प्रतिमा मंडल जी, प्रतिमा जी. अभी बनाओ सुनाओ. हाँ ले लिया. अब 13 Sir, on behalf of All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Bills of Lading Bill 2024. Sir, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways contains several problematic provisions that could seriously harm the interest of shippers, traders and stakeholders. Instead of improving maritime trade, the bill increases government control, reduces transparency and creates scope for commercial fraud, all in the name of legislative modernization. One of the most alarming provisions of the bill is found in Section 5, which gives the central government ultimate power to issue any direction it feels necessary to implement the Act. This means the entire authority over maritime shipping will now be controlled by the central government, leaving no space for state governments.
traders or industry stakeholders to influence policy making in coastal regions. This provision clearly reflects an attempt at centralizing power in the hands of the central government. It also allows the Ministry of Ports, Shipping and Waterways to intervene in any shipping transaction without any valid justification, violating the principle of cooperative federalism and reducing the autonomy of shipping business and traders. Another extremely dangerous provision is found in Section 4.1, which legalizes commercial fraud. According to this provision, even if the goods have not actually been shipped, a fake bill of lading can still be considered valid proof of shipment. Such a provision would also open doors for smuggling, black market trading, and international money laundering. Small traders, especially exporters, would be highly vulnerable as they could easily be defrauded without any legal remedy. This provision also significantly damages India's trade credibility as international companies may refuse to conduct business with India due to the increased risks of fraudulent transactions. Sir, the government has repealed the Indian Bills of Lading Act 1856 without introducing any significant improvement to maritime trade except for centralizing power under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. This is merely a ploy to introduce unchecked government power over maritime commerce. Another extremely unfair provision appears in Section 2 of the bill, which states that all legal and financial liability for any dispute or contract breach will automatically fall on the consignee. That means the person receiving the goods. So this means that even if the shipping company or the seller is at fault, the consignee will still be held legally responsible. This is extremely unjust, especially for small businesses, SMEs, and exporters who may end up paying heavy penalties for mistakes they did not commit. So this provision discourages smaller companies from engaging in maritime trade. It also completely ignores consumer protection, as the bill offers no legal remedies for consignees who receive faulty, incomplete, or fraudulent shipments. So another major flaw of the bill is that it does not regulate freight charges. Shipping lines, freight companies, and consignment agents often increase freight charges arbitrarily, especially for small businesses. The bill does not set any regulations or price caps, which can massively affect small and medium-scale enterprises as they will struggle to afford shipping costs. So instead of supporting small businesses, the bill appears to protect large shipping corporations, allowing them to charge any price they want without government regulation. So this would further push small businesses out of maritime trade. Weakening India's domestic market, the bill exhibits a clear pro-corporate bias, offering no protection to smaller trades or exporters. The bill gives the central government complete power to control shipping lines, manage shipping documents, transfer ownership of goods, and interfere in private maritime contracts. It could also use this power to manipulate trade for its own political or economic interest or target specific businesses by obstructing their trade. This will significantly harm India's ease of doing business ranking, as business will have to operate under constant government interference. Additionally, this paves the way for political favoritism, where only a few selected companies may receive special treatment from the government, while others may face obstacles in their shipping operation. The bill provides no role for state governments in regulating maritime trade, despite the fact that they have a direct stake in port infrastructure, employment, and trade revenue.
excluding states and undermining local governance will severely impact local economies and port revenue generation. The vague and open-ended language of the bill also increases the risks of corruption in maritime trade. The bill creates three major loopholes. Number one, Section 4 allows fake bills of lading to be legally accepted even when no goods have been shipped, making commercial fraud easy. Number two, Section 5 gives the government unchecked power to interfere in shipping contracts without any valid reason. And number three, Section 2 shifts all legal and financial liability onto the consignee, even if the fault lies with the shipping company or seller. These loopholes will encourage massive corruption, large-scale smuggling, and fraudulent trade practices. It will destroy accountability in maritime trade and make it easier for legal activities like smuggling and money laundering to thrive. Sir, the bill also creates confusion and uncertainty in international trade. Foreign investors and shipping companies may feel hesitant to do business with Indian traders because the government now has the power to make sudden policy changes or interfere in trade contracts. This could damage India's reputation in global trade and may even lead to trade restrictions, penalties, or sanctions against India for not following international shipping standards. The bill also fails to modernize maritime trade by completely ignoring digitalization, making it harder for India to keep up with modern global shipping practices. Modern maritime trade also requires arbitration, framework, or mediation systems to resolve conflicts efficiently, which are clearly absent here. The Bill of Lading 2024 is not a progressive legislation amid a modernizing trade. Instead, it is a blatant power grabbed by the central government to centralize maritime power. Sir, I would like to mention here that the Haldia dock complex is connected to national waterways. One, the port is connected with the riverine ports of Bangladesh and Indian state of Assam by National Waterway 97, Sundarban Islands Waterways, and Indo-Bangladesh Protocol Waterways. Sir, I would like to draw the attention of the Honorable Ports, Shipping and Waterways Minister. Sir, every day, more than 100 large cargo ships come from our neighboring country, Bangladesh, to India for trading purpose by using the waterways of Sundarban. These cargoes cross several rivers around the Sundarban Delta, like Muriganga, Matla, Thakurain, Vidyadhari, Piali, etc., leading to soil erosion and thereby causing severe damage of riverbank embankment of entire Sundarban area. Agricultural lands and ponds are getting polluted and becoming infertile, and mud houses of the residents of Sundarban are being damaged by saline water which passes through the broken embankment. The most alarming thing is that many islands like Kumirmari, Shadjelia, Choto Mollakhali, Amtoli, Moushuni, Ghoramora, etc. are becoming vulnerable, struggling to exist due to heavy waves that hit and submerge the islands during the movement of large cargoes. Sir, these worsening by rising sea levels caused by climate change also. Sir, to protect our Sundarban and residents of the area, our Honorable Chief Minister Mamata Bandyopadhyay has sanctioned 27 crore for construction and repairment for the embankment of Sundarban area. So I would like to request the central government, and the Honorable Minister is present here, that either the trade should be conducted by road transportation or the Ports, Shipping and Waterways Ministry should provide financial assistance for maintenance and construction of river bank embankment of entire Sundarban Delta. Thank you, sir. Thank you, Honorable Member. Honorable Member, Sri K. Biraj Swamiji. Thank you very much, sir, for giving me an opportunity to speak on this Bills of Lading 2024. Sir, I would like to thank the Honorable Minister
for naming it as the Bills of Lading Bill of 2024 instead of calling it in some Hindi name, which would not have been found it easy for us to understand or even comprehend, sir. So I was also trying to check the dictionary for English words, and I was actually surprised for several words like computer, mouse, and all those things. The actual translation in Hindi is only transliteration, sir. They call that as computer as a computer and a mouse as a mouse. Probably for the bills of lading, there probably is not an appropriate word in Hindi. I do not know. Maybe they can explain when they give a reply about this, sir. Hai Hindi hai Bahan Patra. Okay, okay, sir. So I should then thank the minister doubly that they have not changed the name from English to some other language, either Sanskrit or Hindi, sir. Sir, I would like to say that maritime trade is not something new, sir. Maritime trade has been here in India for several centuries, and especially in Tamil Nadu. You have to remember that the Cholas were one of the tallest kingdoms at a point of time, sir. It is very underscored in Indian history, sir. We talk so much about the kingdoms in the north, about the Chalukyas and all those dynasties. But the Chola dynasty is one of the largest because they were one of the biggest maritime routes, sir. When China was having the Silk Route, we had probably something like a sea route which was connecting Tamil Nadu to several parts of the northeast and even up to places like Greece and Persia. So we have had evidences, archaeological evidences, which show that these Cholas were doing trade where Indian artifacts have been found in those countries, and their artifacts have been found in Tamil Nadu, sir. Sir, I would also like to mention at this point, Tamil Nadu has broken the historical record where everybody used to say that the Iron Age was only about 1200 BC. But recently there has been a find in Tamil Nadu in one of your archaeological sites where they have dated back the Iron Age to 5450 years ago, sir. It's about 3450 BC. So, and our Chief Minister had announced this, and it is sad that the Union government, neither the Prime Minister nor any of the ministers are even acknowledging this, sir. I'm sure that had this happened in Gujarat, everybody would have been very proudly talking about it, speaking about it, and all those things. So I hope that somebody over there responds and acknowledges that the Iron Age has been rewritten in history from Tamil Nadu, sir, because Tamil Nadu is also a part of India. Kindly consider that Tamil Nadu is a part of India and do not look at us as we are outside of India. The reason why I say that is, whenever a fisherman from any other state, like for Gujarat or anywhere, if he gets into a distress, he is called as an Indian fisherman. But the moment there is a person from Tamil Nadu who is a fisherman having a problem in the Sri Lankan waters, they immediately say it's a Tamil fisherman. They don't call it as an Indian fisherman. So I hope this government would look at Tamil Nadu people also as part of this country and extend the same benefits, sir. Yes. Sir, coming to the bill, sir, apart from historical sites, even during the British period, we had one famous person, sir, Vau Chidambaran, who bought 2 ships, and he was flying it from Tamil Nadu and Sri Lanka, sir. In spite of the British oppression, they were trying to oppress his business. They were trying to, finally they imprisoned him, they tortured him, and then he died as a poor man. But he was the one who actually started off the Indian maritime trade, even during the British era, sir. And commemorating his efforts and his laudable work which has been done, we have named one of our ports in Tamil Nadu as VOC Port, sir, VO Chidambaran Port in Thoothukudi, sir. That is the constituency of our parliamentary floor leaders' constituency, sir. So I hope that the government also does enough so that for the improvement of the ports over there and all other ports in Tamil Nadu also, sir. Sir, even during the earlier period, in Tamil Nadu, we have one song being sung, sir. Velli pani malai meedu lavuvom, adi melai kadal muzhudum kappal viduvom. This was sung several years back, sir, which talks about we will walk in the silver-clad snow mountains, and we'll also go maritiming into the far out seas. So this is the extent to which the Tamil people have scaled great heights, sir. Sir, coming to the bill, this bill is actually talking about the responsibility of any goods to ensure that the safety of the goods and the economic consideration of the people is taken care of. So there is a person who is going to be sending a product, goods, and it is being shipped where the carrier is responsible for it, and on the receiving end, the person who is finally going to get that. So all these people's interests have to be taken into account. So for this, they have something called as a bill of lading, sir. And this bill of lading is something which is a physical format, sir.
Sir, I'm surprised because this government talks so much about advanced India, shining India, and electronic India, and all these things. But this is a process where several countries have started using something called as an electronic bill of lading, sir. You don't need to have a physical copy. The only reason why they have changed this bill is because this act, Bills of Lading Act, is of 1856, sir. In fact, they had made a presentation of this bill in the parliament. Sadly, when I went to attend that, there was not even a facility for translation, sir, and the presentation was made in Hindi. Then I had to have somebody sitting behind me, and then I had to have him translate that to me in English, and I had to take part. Inside the parliament, that MPs from several states are coming and the translation is not available, was actually a very, very sad state of affairs. So after that, I went and complained to the Honorable Speaker also, and he assured that in future that all parliament meetings which are held inside the parliament, they will have translation services provided. And even when the officials were presenting, I went through the bill and I asked them, what is the purpose for changing this, this bill? Why are you bringing this new bill? They said, sir, there is no change excepting the year in which it is being made. It was 1856 and now this is 2024. Other than that, there is absolutely nothing which is of any significance or importance, and there are no new provisions. एक पैनल मेंबर आदरणीय मंत्री जी ने अपना इंट्रोडक्टरी स्पीच में इस बिल का क्या किस कारण से why this bill has been taken into consideration. This was well spoken by the Honourable Minister when he was giving his introductory speech. You were not supposed to be here at that time. So you please listen to him carefully, and then, but what you have talked in his chamber, it is not to be mentioned here. You talk about the bill. Yes, please go. You did not understand what I am trying to tell you. Okay. No, you please play it. Sir, I was not referring to the minister's speech at all. I was only stating that the person who had made the presentation, you can ask, it is all video recorded, sir. It is available on YouTube even today. You can go and see, you can see Minister, the interactions. you have to check it. The officials are the ones who gave me this reply when I inquired about this. You have to check it. Honourable Minister. Yes, please. Just a minute. Honourable Minister, just a minute. Respected Sir, actually in this regard, whatever presentation was made, it was all being done by our senior officials, and all the queries, whatever Honourable Member of Parliament raised, it was effectively addressed. And I believe that's the provision was created there and comfortably done. I don't see any controversial issue to be raised out of this kind of this thing. But if you respected member of parliament, please, respected member of parliament, please let us stick to the provisions of the statute. I think that would be better. Okay. Thank you. Honourable member, please. Please. I am allowing him. Please, honourable member, just. Kone Mujiji, please. Sir, why is the chair speaking for the treasury benches? You are supposed to protect us. I am allowed. For the treasury benches? No. You are representing us also. No. You are representing this chair us is for also, all. sir. Yes, that is exactly what honourable we are member. Very strong, honourable member. Custodian of the... Sir, yes, I know him. Sir. I will clarify the misunderstanding. Okay. No, sir. Sanjay, sit down, Sanjay. Sir, you had assumed that I was not here when the minister made his presentation. I would like to correct that I was here when the minister had made his presentation. But you did not understand what I was trying to say. What I was trying to say was that during the meeting over there, the officials, they told us that there is no change in the provisions or any of the content other than the year in which it is being done. So I asked them, is it because it was during the colonial period that this bill was brought, that this act was brought, that they are changing it, and they just laughed. So I'm just wanting to highlight. I truly understand what you have saying. I truly understand. But if any member, when the meeting was going on, when any officers speaks like this, just clarify, Honourable Minister.
I have given the scope to clarify his stand. There's no clarification. No other intention is there. Please, Bira Samiji, please. Bira Samiji, please. Sir, Bira Samiji, please. I'm actually grateful that you are asking for a clarification immediately then and there, but I hope that on more sensitive issues, the chair will always behave in such a way where the same fairness is extended to all the members in the opposition benches, sir. So because we have found that several times, though we keep screaming, even if we come to the middle of the well and we keep screaming, that none of these are being addressed, sir. Most of the time we are being ignored, and usually it is the protocol of the House. When the House is not in order, the House will not run, sir. But here we find that several times, like even if there are 50 MPs inside the well and shouting, the House is running comfortably where the person is the chair is not at all bothered about this. In fact, this morning also. Please come to the point. No, sir, you brought me here, sir. I was actually going in a different path. हर दिन वेल में आते हैं सर, हर दिन वेल में आते हैं और हर दिन शोर शराब करते हैं, रक्कस करते हैं. ऐसे इनका हिसाब से जाता है तो पार्लियामेंट चल ही नहीं सकते. हमको तो गवर्नमेंट बिजनेस भी है और जो कुछ भी वो लोग बोलते हैं वो भी हमको सुनना है. हम सुनने के लिए आते हैं. Thank you, Mantra. We are only following your precedent, sir. What we are following what you did when you were in opposition, the same democracy you want, and we are trying to follow the same thing, sir. We are not doing anything undemocratic, sir. We are not doing anything undemocratic. Please come to the point. You started it, sir. You started it. No. It should be clear for all members. Sir, you have to understand, Tamil people are people where we are of the belief and faith that wherever we go, every one of them is a relative. They are all related to us. So this is the saying with which Yadam Ure Yavarum Kele. So this is what we believe in, sir. But most of the people in the treasury side, they do not see Tamil people as their relatives, sir. They are looking at them as, see, you can look at them as foes, political foes, but you are looking at us as enemies. So we have a spirit where Sendridvir Ettikkum, sir, I am talking on the bill, please keep quiet. Sendridvir Ettikkum, this enemy should be examined. Sir, can I? The enemy is not unparliamentary. No. The enemy is not unparliamentary. He can speak. How can that be? You please. He will speak. He is capable enough to speak. You please sit down. He is capable enough. As I was saying, sir, we are. Enemy is not unparliamentary, sir. Please wait here now. Sir, I have already explained, I will say that again, sir. Sendridvir Ettikkum Kalaiselvangal Konarninga Serpit, which actually translates to go in all 8 directions and get whatever wealth you can. When we say wealth, we are not only talking about economic wealth, sir. We are talking also about knowledge. So we are willing to learn from others, sir, from everyone. We are willing to learn, and we also hope that you people will learn certain things from us, sir. So we would like to say that we have a lot of things which are precious to us. One of them is language, one of them is culture, one of them is the way we eat, the way we dress, everything we respect, sir. We hope that the treasury benches will give the same kind of a respect for each and every person. I am not saying for my person, sir. I am talking for all the states in India. I think they should be given a free and fair way of carrying on with their culture, their food practices, and their education system. Everything should be given to them, sir. In fact, if you want to go talking about that, I can keep going on and on. Sir, I will come back to the bill, sir. I will come back to the bill. Yes. Sir, national waterways, sir. Sir, national waterways can be a huge thing for the development of this country, sir. The National Waterways project was envisaged about more than 10 years back, sir. Despite so many years, this present government and the budget outlay for that is roughly around 6 lakh crores or more, sir. Sir, despite that, I think there are several, in National Waterway 1 to National Waterway 6. And Tamil Nadu will benefit if National Waterway 4 is being implemented, sir. This is a national waterway which will run from Eluru in Andhra Pradesh to Pondicherry, traversing across Tamil Nadu, especially Chennai, sir, in my constituency. So I would request that the government look into it, because statistics has shown the transportation of goods, the costs, it is 4 times more expensive to transport by road, 2 times more expensive to transport by train, and 0.5 times more expensive to transport by ship. So shipping is one of the cheapest, simplest, most reliable way, and if the
National Waterways project is implemented, Tamil Nadu will benefit in a huge way, sir, and not only Tamil Nadu, all the states, whichever states are being connected through all the National Waterway projects. Earlier speaker, Madam Pramod also had told about this. So I would like to re-emphasize to this government to see what can be done to implement the National Waterways project, sir. And once again, I thank the Minister for retaining the name of the bill in English. But I oppose this bill because only the year has changed, sir. Thank you very much. Good. Thank you, Honourable Member. माननीय सदस्य से आलोक कुमार सुमन जी. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं द बिल ऑफ लेडिंग बिल, जो एक द इंडियन बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 1856 को रिपील करने के लिए लाया गया है, यह विधेयक आज़ादी से पहले का है, लेकिन परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि 1856 के एक्ट को वर्तमान के समय के अनुसार से इसमें बदलाव लाई जाए। विधेयक में 1856 के एक्ट में सब्सटेंस या स्पिरिट ऑफ एक्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ नए प्रोविजंस को लाया जा रहा है ताकि जहाज पर माल ढुलाई आदि से संबंधित प्रोविजन सरल हो सके। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व में व्यापार सिमलेस की तरफ बढ़ रही है। द बिल्स ऑफ लेडिंग एक रिसीट का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, साथ ही साथ ऑनरशिप का पार्ट भी है। इस विधेयक में एक की एलिमेंट भी है। महोदय, वर्तमान विधेयक के सेक्शन 2 में बिल्स ऑफ लेडिंग के अधिकारों को कॉन्साइनी या इंडोर्सी के निहित में उसके हित में किया गया है तथा सभी सामानों की लायबिलिटी जो कि उनके नामों में उल्लिखित है की गई है। महोदय, द बिल ऑफ लेडिंग बिल 2024 के सेक्शन 3 में यह प्रोविजन लाया गया है कि जहाज पर माल भेजने वाले असली मालिक के अधिकारों में छेड़छाड़ नहीं हो। इस विधेयक के सेक्शन 6 में केंद्र सरकार को सक्षम बनाया गया है कि इस अधिनियम के सभी अथवा किसी भी प्रावधान को उपयुक्त समझकर निर्देश जारी कर सकते हैं। महोदय, वर्तमान विधेयक समुद्र के रास्ते माल की ढुलाई संबंधी एक कानूनी दस्तावेज है। भारत में समुद्री विरासत 7,500 किलोमीटर विशाल और गतिशील है। वर्ष 2023 में विश्व के व्यापार में 16% का योगदान रहा है। महोदय, भारत समुद्री क्षेत्र वाणिज्य, कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर रहा है। यह देश के व्यापार का लगभग 95% मात्रा के हिसाब से और 70% मूल्य के हिसाब से संभालता है। वर्तमान विधेयक के पास होने से यह स्वीकृति मिलेगी कि माल किसी विशेष जलयान से निर्दिष्ट गंतव्य तक सुरक्षित भेज दिया गया है तथा सही सलामत पोत मालिक की कस्टडी में आ गया है। महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात रखते हुए माननीय मंत्री जी पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज का ध्यान अपने नारायणी रिवर फ्रंट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में है। विगत वर्षों में मंत्रालय ने 6.62 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन करने के बाद काम भी शुरू किया गया था तथा 2 घाटों को बनाया भी गया था। गंडक नदी या नारायणी नदी को नेशनल वाटरवेज 37 घोषित किया गया था, जो भैंसा लोटन बराज से गंगा नदी हाजीपुर में नेशनल वाटरवेज 3 में मिलाने की है। सरकार के स्टडी रिपोर्ट में भी यह जल मार्ग विकास के लिए उपयुक्त पाया गया है तथा शिपिंग और नेविगेशन इसके माध्यम से किया जा सकता है। महोदय, सदन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि नारायणी रिवर फ्रंट के जल मार्ग 37 को विकसित करके पोटेंशियल कार्गो का परिचालन शुरू किया जाए ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज भी जल मार्ग से व्यापार कर सके। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस बिल पर अपनी बात रखते हुए बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद माननीय सदस्य। ऑनरेबल मेंबर श्री एम श्री भरत जी। थैंक यू सर। Thank you, sir. I rise to speak in favor of the bill of lading
Bill 2024. So largely the intention to really provide legal framework and ensure that any open ends are tied up with this bill is a part of the larger agenda to improve and strengthen the maritime sector. And we support this. In the recent past also we've seen incidents of illegal goods being shipped in, but then the question mark arises on who takes ownership of it, who has the liability for it. I'm glad that this bill does that and also gives flexibility to the central government to issue directions as and where needed based on the current changing circumstances. Speaking about the maritime sector overall, sir, I'm happy to see that our overall cargo handling capacity has doubled from about 800 million tons per annum to about 1630 million tons per annum as of March 24. Indicating the commitment of the NDA government towards developing maritime trade. 9 Indian ports are ranked amongst the top 100 ports globally, and I'm sure over the years many more will show up on those rankings. We're seeing how global events are disrupting maritime trade, like the Russia-Ukraine war, that are leading to shipping delays, higher costs, and impacting all our industries. And a large part of our trade, over 95%, happens through the shipping sector, and 70% of the value comes from the shipping sector. So, sir, there are many things that we need to do to ensure that we remain competitive and increasingly compete with the global market in this. I think the resources that need to be put in this direction, I have a few points on that, sir, which I would like to put in front of you to the government also. One is the high freight costs that have increased in the last few years because of the global uncertainty. How do we reduce that? The next is the shortage of containers. I think India should invest more into developing our own containers. The dependence of carriers from international companies, I think doing more manufacturing. So recently, the Hindustan Shipbuilding Yard in Visakhapatnam was awarded a contract for building 3 ships. I think we need to be doing a lot more of that, and not just building more ships, but building the so-called mother ships, the really large ships which require drafts of 18 meters or more. In fact, in Visakhapatnam, we are unable to receive that because our draft sometimes doesn't meet that depth requirement. And the major disincentive right now is that the shipping lines are expected to invest into that dredging behavior, which often doesn't happen. So the request is, if the government can provide a dredging subsidy to places like Visakhapatnam and other parts of the country, I think we will be able to bring in and reduce the transshipment costs so that we'll be able to do it in our ports itself. The next, sir, is within the shipping ecosystem, a small request from my parliament. We have invested about 100 crores to develop a cruise terminal in Vizag port. But not having an e-visa facility over there is limiting our ability to conduct more cruises over there. Request that the government takes a favorable view on that. I also want to appreciate the government for the turnaround time in major ports. In 2013-14, it was about 94 hours. Now it has come down to 48 hours in 23-24, showing a massive improvement in the efficiency of the shipping sector. And there are many other points, sir, but overall, I think investment into this would be critically relevant for our future, and Andhra Pradesh would be very happy to partner on this, because recently we have announced our maritime policy. We have almost 1,000-kilometer coastline, and we have notified about 14 ports, both large and minor. And we will actively seek the support of the central government and support any regulation that makes this industry more transparent, more agile, and more ready to adapt to the changing global conditions and make us a competitive force in the maritime trade. Thank you. Honourable member Sri Birendra Singh ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से वाहन पत्र विधेयक 2024 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। समुद्री जलमार्ग निश्चित रूप से आयात और निर्यात का एक अच्छा साधन है और केंद्र सरकार का एकाधिकार होने के कारण और राज्य सरकार को कोई विशेष उसकी सहभागिता नहीं रहती है।
जल परिवहन पोर्ट हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का बहुत महत्वपूर्ण साधन है और जिसपे आयात और निर्यात करने वाली एजेंसियों के माल की सुरक्षा, माल ढुलाई और उनको देश विदेश से आयात और निर्यात करने के लिए इतनी सस्ती परिवहन सेवा संभवतः जो है देश में नहीं है। हम चाहते हैं कि जो विधेयक लाया गया है उस विधेयक में व्यापारियों के माल के सुरक्षा की गारंटी हो, डैमरेज और वारफेज चार्ज जो पोर्ट पे लिए जाते हैं उसके बहाने जो व्यापारियों का शोषण होता है वो शोषण को कम किया जाए और उसका सरलीकरण किया जाए और जो माल डैमेज हो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनियां उस डैमेज माल का मुआवजा भी वो देने से कतराती हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो विधेयक लाया गया है वो विधेयक में संशोधन करते हुए कुछ व्यवस्था ऐसा किया जाए कि ताकि इंश्योरेंस कंपनियां समय पर व्यापारियों के उनके डैमेज का भुगतान समय सीमा के अंतर उपलब्ध करा दे। हमारा जनपद वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, सरकार ने फैसला किया है कि गंगा में जल परिवहन के द्वारा यात्री के आने जाने की सुविधा और साथ ही साथ माल ढुलाई के साधन भी हम वहां उपलब्ध कराएंगे ताकि परिवहन भाड़ा कम होने से व्यापारियों को लाभ हो सके, महंगाई कम हो सके। लेकिन अफसोस की बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि जनपद वाराणसी में मिल्कीपुर में वहां पोर्ट बन रहा है, करीब 3000 परिवार गरीब हैं जो बसे हुए हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उनको जबरदस्ती बेघर किया जा रहा है। वहीं बगल में एक भगवान बुद्ध के नाम से संस्थान है, 50 एकड़ की भूमि को जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है और वाराणसी से लेकर के हल्दिया तक, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो बलिया हो, पटना हो, जहां तक वो सेवाएं जाती हैं वहां पर बन रहे पोर्ट पर जो किसानों की जमीन आसपास की है, जहां सड़क जो बन रही है उनको ठीक तरीके से मुआवजा जो है नहीं दिया जा रहा है। वाराणसी में जो परिवहन की सफलता का प्रतिशत है वो 0.01% भी नहीं है। एक बार यात्री सेवा को लेकर के यात्री परिवहन जल मार्ग से भेजने का प्रयास सरकार ने किया और दूसरे यात्री परिवहन की बात यह हुई कि गंतव्य स्थान से तो समय से चली, बहुत ही माला फूल और बाजे गाजे के साथ उस यात्री पोत को रवाना किया गया, लेकिन हर जगह जाते जाते गंगा नदी में इतना बालू का गाद है कि वो फंस जाती थी। फिर वहां से डोजर लगा करके किसी तरीके से जैसे पीछे से ठेल करके आगे बढ़ाया जाता था, फिर आगे जाकर के जो है बलिया में फंस गई, फिर आगे जाकर के वो पटना में फंस गई। अंततः जो यात्रा 15 दिन में खत्म होनी थी वो यात्रा करीब 1.5 महीने बाद जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकी। मैं जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि बनारस से जल परिवहन सेवा को शुरू किया जाए, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां आवश्यक धन उपलब्ध करावें ताकि गरीबों को मुआवजा मिल सके, ताकि गंगा को और गहरा किया जा सके,
ताकि वो परिवहन सेवा ठीक तरीके से अपने गंतव्य स्थान पे चल सके। पानी गंगा में नहीं रहता है, सिंचाई के पंप स्टेशन बंद हो जाते हैं, किसानों की सिंचाई नहीं हो पाती है, गर्मी के दिनों में लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। तो कल्पना कीजिए कि ऐसे स्थिति में जो है जल परिवहन सेवा कैसे वहां चलाई जा सकती है। इसलिए मैं आपसे इस विधेयक पर अपनी बात रखने के लिए आया हूं कि आप आवश्यक धन उसके लिए उपलब्ध कराइए, और जो मैंने पहले कहा कि जो आयात और निर्यात करने वाले व्यापारी हैं उनका शोषण न हो सके, उनको इंश्योरेंस हो सके डैमेज और मार्फेज चार्ज के जरिए, ये सारी व्यवस्था आप करें ताकि ये सस्ती परिवहन सेवा देश को उपलब्ध हो सके। मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री अरविंद सावंत जी। Thank you, Chairman, sir. The bills of leading bill 2025-24. On this bill, I would like to express my views over here. The Honorable Minister has placed it with some recommendations, some comments on it. While doing so, he spoke about the Asmita of India. I did not understand where the Asmita lies in the bill. Because the bill was a colonial bill, was there in 1925, which was based on the Visby rules, Visby rules. Those have been changed. Simplification has been done. You yourself have accepted it, that you have done a simplification in the bill. The major changes in the bill is replacing the term rules with applicable rules reflecting modern standards. The bill also grants the central government the authority to amend these rules through notification in the official gazette, allowing for a swift updates while maintaining parliamentary oversight. I welcome this bill. It's not that I'm opposing the bill, but there are certain lacunae in it. The perspective of the bill, the aim of the bill, the object of the bill. While doing so, do we look at the fact, what is happening practically? When you say that the substantial aspects of the said act are relevant in the present context, since it is a pre-independence legislation, the language therein requires simplification without changing the substance or spirit of the provision, so as to bring in line with the drafting practices followed in recent Indian statute, and in order to facilitate ease of understanding. The ease of understanding and ease of business. There are two terms are different little bit, I feel. Simplification of the language of the provision of the Act by dividing long sections into sub-clauses in the bill for ease of understanding to the extent possible without changing the substance or spirit of the provision. The fact that you have not changed the spirit, not the structure also, not the substance also. So what is the change in it? And what for it has been brought? Just for the sake of that, it was a colonial bill. Now Indian government is bringing this bill. So therefore the Asmita is coming in your mind. I don't know where the Asmita is lying in this. But the fact remains, sir, some of the clauses when you say that right of stoppage of transit or claims for a freight not to be affected. Now right of stoppage of in transit, the pirates are also stopping it. What is the provision to protect that? Something has to be seen in any port. The jurisdiction of the sea miles is given to the state government. Certain level, certain areas, certain kilometers, the state government will control. Beyond that, the central government will control. International border also comes in. It happens in the case of the fishermen also. But now the case is that stoppage, when you want to do the stoppage, any right of stoppage in transit or any right to claim freight against the original shipper or owner, any liability of the consignee or endorsee by reason or in consequences of his being such a consignee or endorsee or of his receipt of the goods by reason or the inconsequences of such consignment or endorsement.
This is not a simpler language. When you said you wanted to simplify, it is not simplifying it. It is creating more confusion. So let us be very simple on this thing. And the most dangerous part of it is, as far as I am concerned, I feel that the central government may give such direction as may deem necessary for carrying out all or any of the provisions of this act. Now there lies the issue. There it is challenging to the federal structure of the country. It's my opinion, because we have a maritime board in the state. Now what will happen to the maritime boards in the state? You want to do something good. The loading is done at one port, the unloading will be done at the other port. In between, the transit is there. In transit, I have said about the pirates also. Now once it arrives over here, what exactly we are going to, the consignee will be, or endorsee will be responsible for suit and everything. That is correct. That's the correct provision. But the fact remains, sir, when you want to do this, you have to have a good ports and have to have a maritime board which is functional at the state level. Now, that maritime board should take care of what exactly the central government wants, or you want it through this bill, whether that maritime board is going to carry that responsibility or not. Who is going to carry it? Central government. Or central government will monitor it or give a directive to the maritime board. Or you are going to make a maritime board non-functional? That answer has to be given by the minister. I feel it is a rather very, evasive action of the central government in the maritime board of the state government. Now, as far as Mumbai and Maharashtra is concerned, you are well aware, you come many times in Mumbai. The Mumbai port was the best port of the country. Of late, you have gone for a ward one. There is opposition, strong opposition, resentment is there, strong opposition, the agitations are going on. I do not want to politicize the issue over here. But when you are developing it, you are bringing the sand from the Gujarat to ward one Bandar to reclaim the land over there or sea land over there. Okay, good. Why not from Mumbai port? If you do it, the draft of the Mumbai port will increase automatically. You need sand. You bring it. The dredging has not been done. The stilting has not been done for a long years. When I am demanding it for last 10 years in this parliament, you people are not doing it. Why not do? Why you are not doing this, sir? And where from this business will go? Where it will go? Not Mumbai port. Ward one will come. It will take some time. Okay? For whom you are doing it? $1 million question. Everyone knows who are holding the ports now. And therefore, while doing so, I, with a folded hand, request you, don't ignore Mumbai. Don't have a revengeful action. Mumbai is not only ours. Mumbai is the country's port. Mumbai is the capital, financial capital of the country. The business goes in Mumbai. Don't ignore Mumbai port. The dredging could have been done easily by when you want to reclaim the land at Ward 1. Dredging, the sand should have been taken from Mumbai port and should have been brought over here. It is not being done. And I feel with the bill, the intentions are good, the simplification is good. It's not a question of asmita, it's a question of business itself. To make a ease of business, these provisions are there, I can understand that. But I expect you, at least Sonomalji, during your tenure, as you are taking some right steps, some policy, in additional policy I'll tell you. Now the encroachment is, you have given some, Mr. Shankar is the secretary, I think, over there with your department. He has given some optimistic answer to me now because the encroachments which are there on the port had to be removed and they should be rehabilitated. There also we have to go for a policy. If you are going to do the ease of business, that also is hampering. So that also has to be thought that you have moved a bit in this direction. I, with full heart, say thanks to that. But we'll have to come to a final achievement by rehabilitating those people who are residing over there. That should also be done. The Mumbai port should be taken up. You must give a priority for the redevelopment of the Mumbai port. Sir, thank you so much, sir. Thank you so much. धन्यवाद जी, धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री रविंद्र वाइकर जी. धन्यवाद सभापति महोदय. बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024 पर बोलने का अवसर देने के लिए पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी
पठानकोट परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्वानंद सोनावाला जी और सरकार का सहृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये विधेयक समुद्री व्यापार यानी मैरीटाइम ट्रेड को सुगम और पारदर्शी बनाने तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने गहरे पानी वाले मेगा पोर्ट वाधवन की आधारशिला रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पोर्ट दुनिया में शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। यह भारत की वैश्विक समुद्र व्यापार का केंद्र यानी ग्लोबल ट्रेड हब बनाने में मदद करेगा और भारत की निर्यात क्षमताओं को यानी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को दोगुना करेगा। इस परियोजना से 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा। बिल ऑफ लैंडिंग बिल 1856 के कानून का आधुनिकीकरण किया गया है। मैं अब बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024 के विषय पर यानी 25 के विषय पर आता हूं, जो 1886 के पुराने कानून को हटाकर एक आधुनिक विधेयक लाने की दिशा में कदम है। ये भारत की व्यापारी समुद्री व्यापार प्रणाली को दुनिया के बेहतरीन मानकों के अनुसार विकसित करेगा। सभापति महोदय, बिल ऑफ लैंडिंग का कानूनी जो ढांचा है एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो शिपर और मालवाहक के बीच अनुबंध को प्रमाणित करता है। ये माल की स्वामित्व यानी हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और दायित्व एंड लायबिलिटी को स्पष्ट करता है। इसका परिवर्तन का अधिकार है, राइट ऑफ ट्रांसफर। विधेयक में यह प्रावधान है कि प्राप्तकर्ता और तीसरा पक्ष थर्ड पार्टी जिसे स्वामित्व हस्तांतरित किया गया है वो सभी माल से संबंधित अधिकार प्राप्त करेगा, यानी ईजीएस हो जाएगा। बिल ऑफ लैंडिंग का निर्णायक प्रमाण यानी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ कार्गो विधेयक स्पष्ट करता है कि यह बिल ऑफ लैंडिंग में दर्ज विवरण की माल का प्रमाण होगा, जिससे किसी की विवाद की स्थिति में यह दस्तावेज निर्णायक होगा। यानी अभी कई सदस्यों ने भी कहा कि यहाँ जो रेट जो कुछ होगा तो उसके ऊपर अपने दस्तावेज जो अभी ये बिल है वो उसके ऊपर निर्णायक होगा। ये इसके अंदर कानून के अंदर ये बिल के अंदर इसका स्पष्टीकरण किया है। केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति इसके अंदर है। सरकार को यह अधिकार होगा कि ये विधेयक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इस विधेयक का सकारात्मक प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ द बिल यानी नौकावाहन व्यापार शिपिंग ट्रेड को आसान बनाएगा, माल ढुलाई को यानी ट्रांसपोर्टिंग की कार्गो हैंडलिंग को बढ़ोतरी देगा, लॉजिस्टिक सेंटर को मजबूती मिलेगी, निर्यातकों को एक्सपोर्ट और व्यापारी टेंडर्स के लिए सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित कर सकता है। मैं इसके माध्यम से आपके माध्यम से भारत में समुद्री व्यापार का विकास महत्व बताना चाहता हूं कि 2014-24 में भारत के प्रमुख बंदरों में कार्गो हैंडलिंग की क्षमता यानी मात्र 800 MTPA की थी, जो मार्च 2024 तक 1400 MTPA हो गई है, यानी दुगनी हो गई है। 98 पोर्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट पूरे हुए गए, जिनकी लागत 32,000 करोड़ रुपए है। इन परियोजना का वार्षिक पोर्ट क्षमता 230 MTPA है, यानी उसमें वृद्धि हो गई है। इनलैंड वाटरवे पर माल ढुलाई 2014 में 18.1 MMT थी, जो 2024 में 133.03 MMT हो गई है। लगभग 7 गुना बढ़ोतरी आई है, समृद्धि आई है, वृद्धि आई है। क्रूज भारत मिशन को मुंबई से लॉन्च किया गया, जिसमें भारत में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सभापति महोदय, जिसमें मेरी कई मांगे है, जिस मांगों में मुंबई में क्रूज भारत मिशन का त्वरित विकास होना बहुत जरूरी है। अभी कई सदस्यों ने कहा कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट वो भी उसका सशक्तिकरण और अच्छे से होना चाहिए। मुंबई को क्रूज टूरिज्म को हब बनाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द इस मिशन को विस्तृत रूप देना चाहिए, ये मेरी पहली मांग है। उसमें दूसरी मांग है, जो मेरा एरिया आता है नॉर्थ वेस्ट मुंबई में, वहां वर्सावा करके एरिया इलाका है, समुद्र के बाजू का इलाका है,
उस वर्षावा जेटी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। वर्षा और उसके जुड़े तटीय क्षेत्रों में जलमार्गों के माध्यम से मुंबई से जोड़ने के लिए वर्षावा जेटी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। इसके पहले भी मैंने कहा था कि वर्षावा जेटी का निर्माण जितने जल्द हो सके उतना, माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे मिला भी था कि वर्षावा जेटी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। मुंबई और कोकण के बीच जलमार्ग की भी आवश्यकता है, जो सालों से लोगों ने मांग की है। कोकण के किसानों और व्यापारी के लिए, विशेषकर फल और सब्जी उत्पादनों के लिए ये बेहद आवश्यक है कि जिनके उत्पादन जलमार्ग से माध्यम से मुंबई तक सुगमता से पहुंच सकते हैं। अगर मुंबई और कोकण के बीच वाटरवे विकसित किया जाए तो खराब होने वाले सामान को जल्दी व सस्ते पहुंचाना जा सकता है। इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट की वृद्धि हो जानी चाहिए। इससे कोकण के किसानों का सीधा लाभ मिलेगा और उसकी आय में वृद्धि होगी। मुंबई, कोकण और अन्य क्षेत्रों में जलमार्ग एवं पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और विकसित करने की जरूरत है। ये विधेयक भारत की समृद्धि और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को विश्वसनीय बनाने के लिए एक बड़ा कदम, लेकिन इसके साथ हमें पतन और जल मार्ग के आधारभूत ढांचे को भी सुधार लाना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। बिल ऑफ लैंडिंग 24 हमारे व्यापारियों उद्योगपति का सुरक्षा और पारदर्शिता देंगी। मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों पर जल्दी से जल्द कार्रवाई करेंगी और भारत को समृद्धि और लॉजिस्टिक का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री भास्कर भगाड़े जी। अध्यक्ष महोदय, बिल्स ऑफ लेंडिंग विधेयक 2024 वरती मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो। हे बिल बिल्स ऑफ लेंडिंग विधेयक 2024 हे भारतीय बिल ऑफ लेंडिंग अधिनियम 1856 निरस्त करून शिपिंग आणि लॉजिस्टिक आणि समुद्री व्यापार प्रक्रियांना अधिक आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने आणलं गेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये मोठी समुद्र किनारपट्टी आहे। या किनारपट्टीवरती अनेक बंदरं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये सुद्धा किंवा किल्ले असतील, बंदरं असतील बांधण्यात आली। माजी पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या नावाने स्थापन झालेलं JNPT बंदर असेल किंवा आत्ताच नव्याने महाराष्ट्रामध्ये पालघर या ठिकाणी वाढवण बंदर होतंय। हे बंदर आज जरी होत असेल परंतु त्याच्या पाठीमागे सगळ्याच शासनकर्त्यांचं फार मोठं योगदान आहे आणि या माध्यमातून परदेशामध्ये आयात निर्यात मोठ्या प्रमाणावरती होणार आहे। हे जे विधेयक आज आणलं जातंय हे फक्त एक सुधारणा नसून त्यातून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता या निर्माण होते। या विधेयकाने व्यापार सुलभ होण्याऐवजी काही महत्त्वाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे। यामध्ये विधेयकामध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेंडिंगला पूर्णपणे कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली आहे, परंतु यामुळे ग्रामीण भागामधील शेतकरी असतील, छोटे व्यापारी असतील, शिपिंग कंपनी, लॉजिस्टिक उद्योग यांना अडचणी येऊ शकतात। भारतातील अनेक भागामध्ये अद्याप डिजिटल पायाभूत सुविधा नाहीत आणि त्यामुळे मोठ्या उद्योगांसाठी हे फायदेशीर असलं तरी लहान व्यापार आणि शेतकऱ्यांसाठी हे बिल अडचणीचे ठरू शकते। त्याचप्रमाणे आपल्या देशातील इंटरनेट सुविधा, सायबर सुरक्षिततेच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या नाही। जर डेटा लीक किंवा सायबर हल्ला झाला तर व्यापारिक व्यवहारांची सुरक्षितता धोक्यामध्ये येऊ शकते। आंतरराष्ट्रीय शिपिंग नियमांशी हे विधेयक मेळ बसताना दिसत नाही आणि यामुळे व्यापार करताना अनेक अडचणी येऊ शकतात। त्यातून भारतीय शिपिंग कंपन्यांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं। विधेयकातील नियमामध्ये व्यवहार पारदर्शक होईल असे भासवलं जात असलं तरी व्यवहार मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरतील असं मला वाटतं। छोट्या व मध्यम व्यापारासाठी हा कायदा प्रतिकूल ठरू शकतो, कारण अनेक प्रक्रिया केवळ डिजिटल असल्यामुळे ते केवळ मोठ्या कंपन्यांसाठी सोयीस्कर होतील। सरकारने यामध्ये लहान आणि मध्यम उद्योजकांसाठी स्वतंत्र तरतुदी करायला हव्यात, त्या केलेल्या दिसत नाही। भारतीय शिपिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्र अद्याप आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या पातळीवर पोहोचलेलं नाही। युरोप, अमेरिका यासारख्या देशांमध्ये डिजिटल व्यवहारासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, परंतु भारतातील बहुतेक लहान बंदरं असतील किंवा मालवाहतूक कंपन्या असतील अद्याप या प्रणालीसाठी सज्ज झालेल्या दिसत नाही आणि म्हणून सरकारने प्रथम देशांतर्गत पायाभूत सुविधा
किंवा लॉजिस्टिक या बाबतीत सुधारणा करून नंतर आंतरराष्ट्रीय मानकांचं अनुकरण करावं असं मला वाटतं. आपला देश हा कृषीप्रधान देश असून माझ्या महाराष्ट्र राज्यातून विशेषतः नाशिक असेल दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातून मोठ्या प्रमाणावर शेतीमालाची निर्यात होते, परंतु वारंवार बदलणाऱ्या आयात निर्यात धोरणामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. निर्यात धोरणामध्ये दीर्घकालीन स्थिरता आणण्यासाठी उत्पादन खर्चाच्या आधारे हमीभाव निश्चित केला गेला पाहिजे. माझ्या दिंडोरी लोकसभा किंवा नाशिक जिल्ह्यामधून कांदे असतील द्राक्ष असतील यांचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावरती घेतलं जातं, परंतु वारंवार निर्यात बंदी केली जाते आणि त्याचा फटका किंवा परदेशी देश आयात शुल्क आकारतं आणि त्याचा मोठा फटका हा कांदा किंवा द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. शेतकरी सातत्याने कांद्यावरील निर्यात शुल्क माफ करावं, पाठीमागे 40% निर्यात शुल्क होतं ते 20% केलं. आजही माझ्या मतदारसंघामध्ये लासलगाव ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा उत्पादक बाजारपेठ आहे. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी सकाळी कांद्यांचे लिलाव बंद करून निर्यात शुल्क 0% करावे अशा प्रकारची मागणी केली आणि त्यामुळे हा शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावरती या माध्यमातून नुकसान होतंय. साखर आणि इथेनॉलच्या संदर्भामध्ये सुद्धा सरकारची अस्थिर धोरणं त्यामुळे हा उद्योग एक संकटात आलेला आहे. एकीकडे साखर निर्यात बंदी केली जाते, दुसरीकडे इथेनॉल निर्मितीला बंद केलं जातं आणि आयात करून परदेशातून साखर आयात केली जाते. ह्या गोष्टी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहेत. त्याचबरोबर मी सरकारला या निमित्ताने विनंती करतो की शासनाकडे कृषी असेल महसूल यंत्रणा आहे किंवा नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून भविष्यामध्ये कोणत्या पिकाची लागण झाली, त्याचं उत्पादन किती होणार, देशाची गरज किती आहे, त्याचप्रमाणे उत्पादन किती जास्त झालंय किंवा किती कमी होणार, किती निर्यात करावं लागेल, किती आयात करावं लागेल याचा विचार करून आयात निर्यात धोरण ठरवावे अशा प्रकारची अपेक्षा मी या निमित्ताने आपल्याकडे व्यक्त करतो. आमच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये निफाड या ठिकाणी ड्रायपोर्ट होतोय, परंतु तो प्रश्न बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित आहे. एका बाजूला वाढवण बंदर होत आहे, दुसऱ्या बाजूला माझ्या मतदारसंघामध्ये निफाड इथे ड्रायपोर्ट होतोय, परंतु त्यासाठी ज्या आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून तो ड्रायपोर्ट एका बाजूला वाढवण बंदर होतोय आणि दुसऱ्या बाजूला हा ड्रायपोर्ट जर झाला तर माझ्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मग कांदा असेल, द्राक्ष असेल, डाळिंब असेल किंवा विविध शेतीमाल निर्यात करण्यास मोठ्या प्रकारे मदत होणार आहे. निफाड ड्रायपोर्ट हा रेल्वेद्वारे वाढवण बंदराला जोडला जावा आणि वाढवण बंदराला जोडणारे जी कनेक्टिव्हिटी रस्त्यांद्वारे ती वाढवली गेली. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी वाढवण बंदराच्या बाबतीमध्ये त्या भागातील शेतकऱ्यांच्या किंवा मच्छीमार लोकांच्या किंवा स्थानिक लोकांच्या ज्या अडचणी आहेत त्यामध्ये लक्ष घालून मदत करावी अशा प्रकारची मागणी मी या ठिकाणी या निमित्ताने करतो. हे जे विधेयक आहे हे केवळ एक पोकळ सुधारणा आहे असं मला वाटतं. याने केवळ फक्त मोठ्या कंपन्यांना फायदा मिळणार असून लहान व्यापारी आणि शेतकरी मागे पडतील आणि म्हणून डिजिटल प्रणालीचा अवलंब चांगला असला तरी त्यासाठी आवश्यक सुरक्षा आणि सुविधा विकसित केल्याशिवाय त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. कृषी क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्यात धोरणामध्ये ठोस सुधारणा करण्यात आल्या नाही. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कृषी जिल्ह्यांसाठी स्पष्ट धोरण आखून निर्यातीला बळ देणारे उपाय करावेत. निर्यातीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा, शीतगृहे, गोदामे यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि सरकारने शेतकऱ्यांना स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस योजना आणाव्यात. त्यामुळे ग्रामीण किंवा छोट्या शहरातील शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. फक्त मोठ्या उद्योगपतींसाठी या विधेयकाचा फायदा होणार नाही याचा सरकारने पुनर्विचार करावा अशी विनंती मी आपल्याला या वतीने करतो. धन्यवाद. धन्यवाद जी. माननीय सदस्य ऑनरेबल मेंबर बिरोतो फर्नांडिस जी. Thank you, Speaker sir. I would like to thank my party leadership for giving an opportunity to speak on this very important bill. Sir, this Bill of Lading 2024 was introduced on August 9, 2024. It seeks to replace the Indian Bills of Lading Act 1856. Now, the Act provides a legal framework for issuance of bills of lading. A bill of lading refers to a document issued by a freight carrier to a shipper. It contains details such as the type, quantity,
condition and destination of goods being carried. Now, the Act states that a bill of lading is conclusive evidence of goods on board. It grants following persons all rights of suit and liabilities regarding the goods. A, the receiver as per the bill of lading. Second, any third party to whom the receiver may transfer the ownership of goods. Sir, when we are discussing the bill of lading, it is but necessary that we get into a discussion of shipping and shipping related matters, because the entire issue is related to shipping. In this context, I suggest the government should facilitate to modernize the shipbuilding industry in India, as we have huge potential to compete the shipbuilding industry in the world with the global industry of shipping. Now, when we speak of shipping, the name that pops up is the Shipping Corporation of India. The Shipping Corporation of India has played a huge role in contributing towards India's economy, and both during peacetime and during hostilities. But provisions in this bill makes one wonder what the real intention is by bringing this bill. Has the government involved all the stakeholders in formulating the bill? Or is it to dilute the stake of Shipping Corporation of India? At first glance, it seems that the bill is to carry forward the legacy of this government to hand over every aspect of our economy to their most favored businessmen. It's not a mere allegation, but because we know who it is. Now, there are certain factors that I would like to suggest to the government when the government is calculating the impact on the shipping industry by trying to bring this bill. Some of the related problems plaguing the shipping industry are container shortage, surge in freight rate and shipping cost, shipping delays at the ports, and turnarounds at the ports. Now, some of the major problems are at customs and immigration. Complex documentation, inaccurate or incomplete paperwork, goods misclassification, valuation issues, delays due to strict regulations, potential for corruption, lack of transparency in the process, and difficulties with classifying restricted or prohibited items, often leading to significant delays in import and export shipments. Key points about custom clearance issues in India at the ports are documentation challenges, missing or incorrect information on customs declaration, invoices and other required documents that can cause delays. Incorrect classifying goods can lead to incorrect duty calculations and clearance issues. Valuation disputes. Disputes over the assessed value of imported goods can lead to delays and additional charges. Regulatory barriers. Complex system of import and export regulations, including restrictions on certain items which can be difficult to navigate. Bureaucratic hurdles. The customs clearance process can be lengthy and involve multiple approvals leading to delays. In some cases, custom officials may demand bribes to expedite the clearances of goods. So this bill of lading has to have provisions to ensure such practices are not allowed at the customs or at clearance places at the port. Lack of transparency. Importers may not have clear information on duty rates and other customs requirements, creating uncertainty. Technology issues. Glitches in the electronic customs clearance system can further hamper the process. Sir, recently, when we speak about shipping industry, the government has formed a 12-member panel to advise the government on the national shipbuilding mission. But sadly and surprisingly, why are the Indian shipbuilding designers not placed on the panel? Our shipbuilders have done tremendous progress and contributed in the shipbuilding industry in a big way.
Some are involved in designs of corvettes, frigates, destroyers, passenger vessels, but none of them have been included in this particular panel. They are not only not included, but here we come to know that people who are nowhere connected with it are on the panel. I smell a rat because it looks like an entire exercise which may finally end up in breaking Shipping Corporation of India, and who will gain from that but the most favored businessman friend of the government. Sir, while presenting the budget, the Honorable Finance Minister announced a 25,000 crore maritime development fund, a revamped shipping building financial assistance policy to address cost disadvantages faced by Indian yards, a credit note scheme for shipbreaking in Indian yards to promote circular economy and infrastructure status to large ships above a specified size were also announced. Today, India holds less than 1% of the global shipbuilding market, but aims to break into top 10 ranking by 2030 and top 5 by 2047. Why not? We have to. But with such backward-looking provisions, are we going to break into the top 10? Sir, coming to my state of Goa, everybody knows we are situated on the west coast of the country. For centuries, there was sea trade that has occurred, taken place from foreign countries into Goa, and the shipping industry has prospered. The thrust of the government should be also to ensure that the shipping lines are exploited to the maximum so that it benefits not only the state but also the country in terms of economy. More trade, more business. Goa, unfortunately, was ruled for 450 years by a colonial power, again which came through the sea route. And as irony would be, today we are again become slaves of a trade which has come by sea, where the coal is being brought from Australia, and when it comes to the Mormugao Port Trust, which is now Mormugao Port Authority, again the coal has to go to other states like Maharashtra and Karnataka. So they are expanding tracks, they are expanding roads, and in the bargain, the beautiful state of Goa is getting destroyed. To the extent, a few days back, even the iconic, most revered temple of Lord Kapreshwar was demolished by authorities to facilitate this expansion. For what? And people who tried to save the temple have been booked. Even yesterday, sir, for facilitating this coal trade, when they were trying to expand the railway tracks, even the sarpanch, a lady sarpanch, has been booked by the authorities. Even the local authorities have become agents of the central agency to suppress. So I request you, sir, this bill that has been introduced, let us use it for the benefit of all the states and the country, instead of using it for certain trade which is going to destroy certain places like the way my state of Goa is being destroyed. Thank you, sir. Thank you, honorable member. Mananiya Sadasya Shri Abhijit Gangopadhyay ji. I thank my leader Narendra Modi ji, and also I thank Honorable Speaker while speaking in support of this bill. The bill, in the objects of the bill, what has been stated by the Minister, no, it is there. For ease of business, and for giving some directions to the persons involved in the business,
which will take India at least 50 years ago, 50 years preceded from this time today by use of this bill. Now, one of the respected members were talking about sending some some goods were indulged in water, having some furnace oil, etc., and nobody knew who was the owner of the goods. Here, without giving any blow to the earlier bill which has been repealed by this act, without giving any blow, it has been stated clearly that the consignee would be accepted as the owner of the goods, where the property in the goods would transfer to the consignee. It is a deeming provision. It is a fiction of law that while before this, in the bill of lading, the consignor and consignee was mentioned, and it was the consignor who was taken as the owner of the goods. Here, by using one legal fiction, it has been done that the property in the goods means the ownership of the goods will be deemed to have been transferred to the shipper. That is the owner of the ship through which the good was being sent and also the consignee to whom it has been sent. The result, suppose 1,000-ton smuggled coal from West Bengal, is transported by ship from Bengal to some other country outside India, and if it is caught by any of the Navy or any of the water monitoring authority, then the first question would be, who sent this 1,000 tons of coal? This coal is coming to my mouth because of the reason that there is a coal scam, huge coal scam in West Bengal. Who is the owner of this coal? Who is the owner of this coal? Now nobody will be able to find it out. Who is the owner of the coal? Here it has been done that it is deemed, it will be considered, it will be accepted that the person who is shipping the coal is the owner of the coal. That's the advantage which has been created by this bill in modern terms instead of a bill of 1800. A bill which was framed in 1800. A new bill was required, is always required to come to bring the new terms in the Act. Here another very important is Section 2, where the liabilities also, not only the rights, liabilities also has been fastened upon the shipper, that is the consignee or the person who is transporting the good. Bill of lading is actually a paper, a document which shows that who is sending the goods, what is the amount, where it is being sent, and to whom it is being sent. Bill of lading is a very simple thing. Bill of lading, some informations are given. Now it was always considered that the person who is sending the bill, he is the owner. Now in this bill it has been stated at the very outset, that is the object and reasons, to transfer of rights of suit and all liabilities to the consignee. If something happens to the good, who would sue?
the person who has some insurable interest in the good. Why I am saying insurable interest? Because anything which is to be shipped is bound to be insured. So the person who has some insurable interest in the goods will sue. Now, if the person is not available, if the shipper says that yes, somebody booked it, if the consignee said yes, I sent some money, but the person who sent it is never found, so there will not be any suit. But in the meantime, the shipper and the consignee has already been faced, has already been accounted for huge loss. So in this bill, it is stated that who will extract the money, that is the damages caused due to some problems which has been shipped in the goods, and not only the goods, some goods which is mentioned in the bill of lading but has not been given in the ship. Here the word ship includes also any carriage by way, by road. Shipping does not always mean that it has to be shipped by a ship. Shipping is a term of insurance which covers also the carriage of goods by transporters through road. So, here if something is required to be done in the court of law, the person to whom the good has been transferred for shipment, not the ownership, to the consignee, not the ownership, he can also sue the person who is liable for the damages. This particular provision, along with the opening up of the whole thing, that is Section 5, proposed Section 5, the central government may give such directions as it may deem necessary for carrying out all or any of the provisions of this Act. It has an opening to the national trade and also the international trade. For doing something, if some direction is required, a person is to go to the court of law, where a litigation will continue for 20 years. Whereas the government has taken the responsibility of giving directions. If the direction is bad, court has already vested with the power by Constitution of India to declare it as bad. So whether it is a bad decision or good decision, I am not on that. I am on the question whether the government can issue certain directions for the betterment of the transport by sea or by road. The bill of lading is not only used only in ship, it is also used in transport and also in multimodal Transport Act. Under multimodal, we have one Multimodal Transport Act, which shows that some goods will start, say, from Calcutta to Paradip, from Paradip to some other country, from that country, from the port to some factory. For the whole thing, one bill of lading can be used. This is said multimodal transport. So this multimodal transport will also come within the meaning of this Act. So while supporting the bill, I say that it has opened up an area for our country which is very progressive, which will bring India at least 50 years ahead of our time. Thanks to all. I conclude. Thank you, Honourable Member. Honourable Members, M. Gurumurthy ji. Thank you, Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak on the bills of lading bill
2024. Sir, the new bill simplifies and improves the efficiency in the way we do business in terms of maritime trade, sir. Honorable Chairman, sir, I will call out few strengths and positives of the bill. First one, replacing the old 1856 Act is a big step towards modernizing and standardizing the trade in making India complete with global markets and standards. And second point, sir, this bill brings clarity in the supply chain and in protecting the interest of shippers, freight carriers, and third-party buyers, reducing any potential disputes, sir. And third point, sir, as India becomes fifth largest economy of the world, and in the view of the strides that we are making in making India movement, truly complements such changes to the bill, sir. Chairman, sir, as a representative from Andhra Pradesh, a state which has second longest coastline in India, I know how important this law is for strengthening India's maritime trade. Sir, in this time, I want to recall, under the leadership of our ex-CM Sri Y. Jagan Mohan Reddy Garu, Andhra Pradesh has taken several steps to boost the blue economy and seen a substantial growth. To refer briefly, sir, building 3 new greenfield ports at Bhavanapadu, Machilipatnam and Ramayapatnam, and developing 9 fishing harbors to support fishermen, exports and substantial practices, sir. These harbors increase fishing and prawn catching by approximately 4.5 lakh tons, contributing 9,000 crores gross value added, sir, and providing employment of 1 lakh fishermen community, sir. Chairman, sir, I see there is a big necessity and action on our, sir. As outlined Part 10, 13th Schedule in Infrastructure and Special Economic Measures of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, the Government of India committed to develop of a new major port at Duggarajpatnam in Tirupati Parliamentary Constituency, sir. Despite this provision, the project initiation has not yet commenced, sir. While that was expected to kick off by 2018 itself as a phase 1, sir. Chairman, sir, I urge the government to expedite the development of shipbuilding and port infrastructure at Duggarajpatnam in Tirupati Parliamentary segment, sir. This project holds immense potential and regional economic growth and national maritime advantage, sir. Honorable Chairman, sir, I would like to call out few challenges of this bill, sir. First one, although the bill recognizes the rights of bona fide holders of bills of lading, it does not transferring bills giving support and encouragement to the small traders in propelling the maritime economy, sir. And second point, sir, the dispute resolutions are not heavily discussed, which could lead to unpleasant scenarios between consignees, shippers and the liability, sir. Rights under the bill, sir. And third point is, sir, I would like to call out for training programs to build the capacity formation that is needed in terms of infra, coordination and seamless coordination, sir. Thank you, sir. Finally, we support this bill, sir. Thank you, honorable member. माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी. धन्यवाद सभापति जी कि आपने मुझे लैंडिंग बिल पे अपनी बात रखने का मौका दिया. सभापति जी, 1856 में जो कानून बनाया गया और मैंने बिल पढ़ा,
क्या पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है कोई बदलाव नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया। तो सरह लेने में और प्रचार करने में तो मौजूदा सरकार को मेडल अलग से देना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कर दिया और सरह ले लिया कि ये हमने किया है। नाम बदलने में और सरह लेने में हमारी सरकार को महारत हासिल है, जबकि हकीकत ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ है जिसके आधार पर सभी देशों को काम करना पड़ता है। अगर सरकार कुछ बदलाव चाहती थी तो इसमें बिल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर सकते थे। ये डिजिटल युग है, चर्चा होती है और सब जगह, आप तो फोन से लेकर सब जगह जो है डिजिटल बातें होती हैं, लेकिन फॉर्मेट आपने कागज में ही रखा है। कई देशों के बिल इंडिया में ही बन रहे हैं मैन पावर की वजह से, वहां मैन पावर कम है, यहां मैन पावर ज्यादा है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाता तो बहुत से भारतीयों को रोजगार मिल जाता, लेकिन मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार का रोजगार देने में उनको बड़ी परेशानी है और वो रोजगार देने के खिलाफ, इसलिए उन्होंने शायद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं रखा। जैसे उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया में कोई माल चढ़ता है जहाज पर, उसकी इन्वेंट्री यहां बनती है, उसके लैंडिंग बिल भी इंडिया में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर देते तो उसका बैक एंड फॉर्मूला हमारे पास आ सकता था, इससे देश को फायदा होता और हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 कानून के तहत कई राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित होने थे, परंतु अभी तक सभी नहीं बने। यह जलमार्ग बन जाते तो बाढ़ व सूखे की समस्या से भी निजात मिल सकती थी, लेकिन सरकार को बाढ़ से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे भी आम जनता को परेशानी होती। पेट्रोल और डीजल की जो खपत है, अगर ये बन जाए जलमार्ग तो बहुत फायदा जो है वो खपत कम हो सकती है और बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैं अपनी भावनाओं के साथ इस बिल को अपोज करता हूं और मैं कहता हूं कि सरकार अगर चाहे तो हमारे सुझाव को मान के कुछ अच्छा कर सकती है, वरना फिर मैं कहूंगा दोहराते हुए कि सरह लेने में और नाम बदलने में सरकार को महारत हासिल है। इसके लिए पुनः मेरा अनुरोध है कि इनको मेडल दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य जी प्रदीप पानिग्राही जी। Speaker, Honorable Chairman, sir, I support this bill introduced by Honorable Minister Port and Shipping, Sri Sonovalji. This bill is very important as far as the international trade and India's position as a global player, developing our economy in a national and global field. This bill replacing the old bill, which is outdated in nature, and to comply our international norms and protecting our national interest in modern time. This is a bill which is giving an ample opportunity with new sections, new simplifying the structure and bringing the many changes in old bill to make it a visible to in port sector to giving ample opportunities. As the different section of this bill also reflects on the many speakers on the opposition side criticizing this bill, but I see this bill is a very important bill as far as the compliance with international obligations, streamlining regulations, broadening eligibility for ship ownership, establishing maritime utility framework, streamlining administrative framework, including integrating coastal and inland waterways, simplifying regulations. All these are very important factors that was covered under this bill. As far as the under this bill, as Odisha is also affected under this bill, Odisha's coastline is around 480 kilometers. So we need the honorable request the honorable minister to focus Odisha, as the Prime Minister is already focusing in the Purbodaya as a East policy. Odisha plays a major role in coming in an area, and Prime Minister regular visit to the state and the double engine sarkar that works in the center and the state. This bill also play a major role. I request the Honorable Minister to focus developing new ports, particularly in Astaranga, in Puri district, and Bahuda at Ganjam, and Palur in Chhatrapur of Ganjam district.
this will do a wonderful job as far as the economic growth of Odisha is concerned. As the communication is a very important part of the nation, as per the seaport is concerned, or the airport is concerned, or the railways are concerned, or the roads are concerned. So in modern days, the communication play a major role. I hope this bill brings in a major changes in as far as the maritime trade is concerned. I hope the Honourable Minister during this bill, passing of the bill, he will focus on Odisha to bring new ports with new provisions to make a Viksit Bharat agenda of Honourable Prime Minister to 2047. And Odisha will play a major role by providing a growth of contribution to the national growth as far as economy is concerned. Thank you for giving me an opportunity in this bill. Thank you. Sri Sachidanandan, Honourable Member Sachidanandan. Good evening, Speaker, sir. The exports from India have come to a standstill as shipping companies hiked shipping charges nearly 6 times. Various sectors such as jute, seafood, food processing and species have been disrupted. Items are all in stock. Due to this, hundreds of people have lost their jobs. It is said that the reason for the increase in price is the shortage of containers. Higher import costs lead to higher prices for goods ranging from toys to computers. Exporters say that the union government is doing nothing to tackle the crisis. Before COVID, a container that was sent abroad for rupees 2 lakh now costs up to rupees 12 lakh. The fare from Kochi to Shanghai, China was $1,200 to $1,500. China was now risen to between $5,000 to $6,000. The Kochi-Dubai container fare has been increased from $300 to $350 to $1,000, and the Kochi-Colombo fare has been increased to $1,500 to $2,000. Due to the COVID lockdown, shipping containers are stuck at ports due to the shortage of containers. The Kerala Exporters Association said that the shortage of containers has increased due to reduced the imports from China. Due to the reduced imports from China, the shipping companies are reluctant to deliver containers to Kochi to higher profits at other ports. So, the lading bill amended as to control the shipping charges. Thank you very much, sir. He looks like. Yes. Control. Rajaram Singh, Honourable Member. सभापति महोदय, ये शिपिंग बिल बात तो की जा रही है कि 1856 के हम कानून को बदल रहे हैं इसके जरिए, लेकिन दूसरा सच ये है जो बड़ा सच है कि जैसे रेलवे और विभिन्न क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया है, इस शिपिंग बिल के जरिए भी प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा तरजीह दी गई है। अभी माननीय सदस्य ने भाड़ा वृद्धि की बात कही, तो अंग्रेजी विरोध का नारा है, लेकिन कंपनीकरण की कोशिश है इस शिपिंग बिल के जरिए भी, और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। एक दो बात इस संदर्भ में कहना चाहूंगा। सेतु समुद्रम का किस्सा तब पढ़ा था जब सांसद यहां नहीं थे। एक अखबार में रिपोर्ट पढ़ी
कि सेतु समुद्रम से बड़े जहाज़ों को ले जाना है और उसके लिए भारत सरकार ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि सेतु समुद्रम कुछ भी नहीं था, वो लंका के बीच में वो पहाड़ बना हुआ है, प्राकृतिक बनावट है, और राम रावण युद्ध नहीं हुआ था। तो एक तरफ राम मंदिर पर राजनीति की जाती है और दूसरी तरफ कॉरपोरेट हित जहां टकराते हैं वहां पर ये एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कौन सा अपॉर्चुनिज्म है? और दूसरी बात, एक समय देश में दाल का संकट हुआ था और उस समय अफ्रीकन कंट्रीज में बड़े कॉरपोरेट घरानों ने जमीन खरीदी कि इस पर दाल उत्पादन होगा और अडानी के जहाज से वो दाल भारत आएगा। तो यह जो फेयर का एक डील है, इसको इस बिल के जरिए और सुगम बनाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये ठीक नहीं है। और तीसरी बात जो मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि शिपिंग इंडस्ट्री में जो रेगुलर काम है, नियमित रूप से नियमित बहालियों को छोड़ करके अब कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की बहाली हो रही है और उनको बहुत ही कम पेमेंट दिया जा रहा है, उस पर खटवाया जा रहा है दिन रात, जबकि वो रेगुलर काम है। और इस पक्ष पर बिल में कोई चर्चा नहीं है कि जो शिप बनाते हैं, शिप चलाते हैं, शिप पर काम करते हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जीवन स्थिति क्या है, मजदूरों की स्थिति क्या है, और उनको रेगुलर बहाली अगर रेगुलर काम के लिए पहले था तो आज उसको क्यों खत्म किया जा रहा है और उसको भी उचित मानदेय या वेतन नहीं दिया जा रहा है, न उनके जीवन की अच्छी स्थिति है। तो महोदय, यही मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में एक बात और कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। पारादीप बंदरगाह सरकारी है उड़ीसा में, उसके बगल में एक प्राइवेट कंपनी को बंदरगाह देने की कोशिश की गई। उन्होंने उस समय, हालांकि वो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, फिर वापस हुआ वो निर्णय, लेकिन उसमें कोशिश ये थी कि हमारे आयरन ओर को सीधा उस अपने प्राइवेट बंदरगाह से वो अपने देश में ले जाएं और अपने यहाँ आयरन बना करके और वो सेल करें या उसको अपना इस्तेमाल में लाएं। तो ये जो धीरे धीरे ये कोशिश चल रही है, उड़ीसा के, गुजरात की कहानी हम बराबर देख रहे हैं कि प्राइवेट पोर्ट पर किस तरह से बड़े पैमाने पर ड्रग्स आ रहे हैं, कुछ सीज हो रहा है और बाकी देश के अन्य हिस्सों में जा रहा है, हमारे नौजवानों की सेहत खराब कर रहा है। तो इन तमाम पक्षों पर इस बिल में एक बात होनी चाहिए कि उसके ऑलराउंड जो असर हैं, जो इरोजन के हैं, पर्यावरण संकट के हैं, उन सारे पक्षों पर इस बिल में चर्चा होनी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री N.K. Brahmachandran. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the bills of lading bill 2024. Sir, I was surprised to hear the arguments and observations from the Treasury benches that it is going to make drastic changes in the maritime sector because ample business opportunities will be provided after passing of this bill. Sir, there is nothing to oppose or nothing to support in this bill. Rightly, the honourable member has observed in his opening remarks that it is a repeal and reenactment of a pre-independent legislation. But I would like to add two more words to along with this. It is a repeal and reenactment of a pre-independent legislation without any changes and without any reforms to the tune of the time. What is the scope of this legislation? Sir, the pre-independent legislation was Indian Bills of Lading 1856. It is a law that governs the transfer of goods shipped by the sea. It defines the rights and liabilities of carriers and consignees. And I have gone through the Indian Bills of Lading 1856. So the same bill, same provisions, and the contents, everything is the same. Then what is the scope of bringing a new bill without any changes in order to suit with the situation, in order to suit with the new liberalized economic era? Because this bill is enacted in the year 1856. That is 170 years ago, this bill was passed by the British legislature or British India government. And even now, after 170 years, the government of India, led by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji,
And even the minister, port minister, also has spoken in his opening remarks that 1,500 obsolete legislations has already been repealed. And we want to decolonize the legislations, as in the case of IPC, Criminal Procedure Code, and Indian Evidence Act, but copying it in a different form. Nothing else is there. There is no in-depth wisdom is not being put on the legislation. That is the reason by which I am saying there is nothing new so as to oppose or so as to support the bill. Sir, only one new provision has been incorporated in the bill, that is Clause 5 of the bill. Sir, what is Clause 5 of the bill? The central government may give such directions as it may deem necessary for carrying out all or any of the provisions of the bill. So other than this, the entire provisions are the same. There are three clauses mainly. Number one is rights under bill in loading west in consignee or endorsee. And the second one is no right of stoppage in transit and right to claim freight against the original shipper or owner. And the third point is regarding the bills of lading in the hands of a consignee is a conclusive evidence of the shipment as against the master. This is the content of the bill 1856 as well as 2025 bill is same provision, same content, nothing is doing. So my pertinent question I would like to ask to the Honourable Minister, you have incorporated a new provision, Clause 5, that the Government of India is empowered to give directions from time to time as it deems necessary, either for all the for implementing either all the provisions or any of the provisions of the bill. So I would like to know from the Honourable Minister, even if there is no such provision in the bill, a bill passed by the Parliament, Government of India is empowered to give directions so as to implement the provisions of the bill. It is implied. There is no need of an explicit provision in the bill that the government can give directions for the implementation of the provisions of the bill. So what is the purpose of incorporating a new provision, Clause 5, in the bill? Just to show that we have reformed the bill. That is the only reason why we say new bill has been brought in. Otherwise, you have to come with so many changes. Sir, I have got 5 suggestions. Let me come with these positive, very concrete, positive suggestions. So the number one is the lack of adequate safeguards for Indian exporters and importers. Sir, bills of lading are one of the most essential documents in international trade, as they serve as both the receipt for goods and the title to the goods being shipped. However, the provisions under the bill fails to provide adequate safeguards to Indian exporters and importers, the backbone of the country's trade sector. Sir, exporters who are primarily small and medium-sized business in India often lack the resources of bargaining power to negotiate the terms of international shipping contracts. While the bill introduces several standardization measures, it does not address the challenges faced by the Indian exporters in avoiding fraudulent practices, especially when dealing with the foreign shipping companies and agents. So I suggest a special provision for Indian exporters to have stronger legal recourse in case of disputes involving bill of lading, particularly in relation to foreign shipping companies. This could include establishing a dispute resolution mechanism specifically aimed at protecting the Indian interest. That is the first suggestion. Sir, 5 suggestions. This is very positive suggestions. And the second one is regarding the potential for increase the cost of doing business. Sir, the bill, there is a lack of clarity on the regulatory framework that will govern the fees and charges related to bills of lading. The bill potentially opens the door for increased fees and charges associated with the issuance, transfer and please 2 minutes. Issuance, transfer and negotiation of these documents. These costs could place additional financial burden on Indian businesses, particularly the export and import. So my point is that the cost competitiveness is a critical for Indian business to succeed in the global market. So sir, I suggest a regulatory cap on fees and charges for bills of lading, ensuring that this do not unduly burden the Indian MSMEs. And the third suggestion, sir, regarding the maritime sector and the carriage of goods seized by the sea. There is another bill is also carriage of goods by sea bill. Sir, there are provisions there are contradictory provisions are also there. So I would like to urge upon the minister, kindly go that there shall not be a contradiction with these 2 bills. And the fourth one is very, very, very important suggestion, that is the technological advancements and the digital bills of lading. Sir, this is the most
post-modern era of communication technology, even the artificial intelligence era. So the issue is, it is limited focus is there on the digital transformation of the maritime industry. In an era of rapidly advancing technology, the electronic bills of lading, the use of electronic bills of lading has become the global standard in international trade. Several countries, including major trading nations like United States, Singapore, UK, have already embraced digitalization in the shipping sector. India, however, has lagged behind this area. The bill makes, sir, 1 second. The bill makes only passing mention of the electronic bills of lading and fails to provide a robust framework for their adoption and regulation. The lack of clarity in digital bills of lading could make India's maritime industry less attractive to international shippers and importers who increasingly prefer the speed, security and efficiency of digital solution. Sir, with these suggestions, I make 2 points, that is regarding the Vizhinjam International Seaport Limited. There was a commitment on the part of the government of India that after the completion of the Vizhinjam International Seaport Limited, there is an agreement, commitment on the part of the government of India that viability gap funding will be provided to the Vizhinjam International Port. But now the government of India is withdrawing from their commitment to provide the VGF. That has to be taken into consideration. And the last point, sir, regarding my constituency, there is a Kollam Port Honorable Minister, Mr. Suresh Gopi is also sitting. He is also from my constituency. He is born and brought from my place, and we studied with me in my college. And he is well aware of this fact. Sir, my point is that is Kollam Port, it has started since long. Unfortunately, it is not been operational. Yes, the government of India clearance has been given. There is a, sir, 1 second. There is a Minikoi to Kollam ship travel possibility is there from Lakshadweep. That may be considered. With these points, I in a way support the bill. Thank you. Thank you. Sir Nishikant bhai. Taking 3 of my points. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदय। सर, ये बिल देखने में छोटा लगता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सत सइये के दोहरे, जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। इसका क्या इम्पैक्ट है? अभी हमारे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया पिछले 10-11 साल में, शायद उसके बारे में वो पूर्णतया समझते नहीं हैं या समझाना नहीं चाहते, या अपोजिशन का जो रोल है सभी बात का विरोध करना, वही विरोध करना चाहते। ये 1876 का एक्ट है, और इस बीच में भारत सरकार ने इस सदन की जानकारी के लिए 1876 के एक्ट के बाद 3 बार इंटरनेशनल कमिटमेंट किया। एक 1921 में जब अंग्रेज यहां थे, ब्रसेल्स का समझौता हुआ और उसने कहा कि लैंडिंग बिल के ड्राफ्ट को हम बदलेंगे। और दूसरा, जब कांग्रेस की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार पहले 1978 में, और फिर 1989 में जब राजीव गांधी जी थे, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर यह बातें कही कि लैंडिंग के बारे में जो वाहन पत्र है, जिसके बारे में कि लाना ले जाना, सामान कैसे, किसकी डिलीवरी होगी, कौन उसका मालिक होगा, उसके लिए हम एक्ट में संशोधन करेंगे। और 1992 में फाइनली नरसिम्हा राव ने उस एक्ट पर साइन किया। 1921 से लेके आज तक 2025 तक किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि 1876 के इस एक्ट को बदलना है। अभी रिपीलमेंट की बात हो रही थी सभापति महोदय, इस सदन की जानकारी के लिए, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन प्रेमचंद्रन जी आपके जानकारी के लिए, क्योंकि आपने कहा कि सरकार वाहवाही लेती है कि 1500 बिल उसने पास कर दिए, मतलब रिपील कर दिए, खत्म कर दिए अंग्रेजों के समय के। मैं आपको केवल 1874 का, इस सदन की जानकारी के लिए और इस देश की जानकारी के लिए, 1874 में एक बिल अंग्रेज लेकर आए, ड्रामेटिक एक्ट बिल, क्योंकि उनको यह लगता था कि आजादी के आंदोलन, जो ये ड्रामा है, जो नाटक है, जो गीत है, ये जो गाया जाता है, सड़क पर उतरकर जो लोग गाते हैं, ये देशद्रोह है। और उन्होंने एक ड्रामेटिक एक्ट बिल बनाया 1874 में, जिसमें यह कहा जाता था कि 10 लोग यदि सड़क पर
डांस करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, ड्रामा करते हुए यदि मिलेंगे, उन सबों को जेल हो जाए। उस एक्ट के आधार पर सभापति महोदय, क्या आपको नहीं लगता कि दुल्हा जो है वो बारात के साथ जेल चला जाता? 1876 का एक्ट था, 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बदला। क्या इस देश को यह पता है कि इस तरह के एक्ट हमने बनाए? बांस जो कि प्रत्येक घरों में होता है, वो घास है, उसको हमने वृक्ष बना दिया। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी जो है बांस पर चलती थी। यह भी 150 साल से एक्ट था। क्या इसमें गरीब परेशान नहीं हो रहा था? क्या उसको रिपील नहीं कर देना चाहिए था? ये दो एक्ट मुझे लगता है कि सदन के लिए और ये देश के जानकारी के लिए है कि 1500 एक्ट जो हमने बदले हैं, उसमें से किस किस तरह के घटिया कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए थे और उसको बदलने की आवश्यकता पड़ी। वैसा ही 1876 का एक्ट है। अब आप समझिए कि पूरा, अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, आज ही चर्चा चल रही थी कि हम टैरिफ पर बात करना चाहते हैं। यहां कांग्रेस के युवराज आकर बात करेंगे कि उस पोर्ट पर जो है पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया। कभी आपने सोचा कि 26/11 कैसे हो गया? बॉम्बे में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, कभी उसके बारे में आपने सोचा कि आपके पास क्या अधिकार? ये लेडिंग बिल है क्या आखिर? इस साल से लेके पिछले साल, पिछले 4-5 साल में यदि आप देखेंगे तो इस देश में लगभग 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है पकड़ा गया। ड्रग्स, हेरोइन ड्रग्स, जो हमारे युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि आप बायलैटरल की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़ रहा है और चाइना जो है, चाइना से गुड्स नहीं आना चाहिए। आप कहते हैं सिंगल प्लास्टिक यूज जो है हमको बंद कर देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस हमने लगा दिया। स्टील सेक्टर में जो डंपिंग यार्ड हमने यहां बना दिया है वो यहां नहीं आना चाहिए। एग्री? हम आपके सारे बात से सहमत हैं कि अमेरिका यदि टैरिफ यदि लगाएगा तो हमारा व्यापार जो है दूसरे जगह बढ़ना चाहिए और उसके लिए अपना देश बनाना चाहिए। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी साहब, उन्होंने बहुत कहा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। एग्रीड, हमको कुछ नहीं पता है भैया, लेकिन कभी ये लेडिंग बिल तो पढ़ लेते कि हमने क्या किया। आज आप समझिए कि आप किसी कंट्री के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ हम अपना व्यापार नहीं करना चाहते। पाकिस्तान को हम दुश्मन देश मानते हैं और पाकिस्तान के साथ हमने व्यापार रोक दिया। चाइना के साथ हम अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है। टेक्सटाइल में हम पूरी दुनिया में आज जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं और पूरे चाइना के हालात हैं, हम टेक्सटाइल के साथ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यदि बढ़ना चाहते हैं आप, तो यदि शिपिंग संघाई पोर्ट से हुआ और संघाई पोर्ट सिंगापुर चला गया, यदि किसी आदमी ने चाइना से टेक्सटाइल को हमारे यहां के लिए भेजा और उसने कहा कि ये सिंगापुर जाएगा और सिंगापुर से नाम बदलकर वो फिर यदि हिंदुस्तान आ जाएगा, तो हम तो कहेंगे कि इसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, वो तो सिंगापुर है। उसी तरह से ऑयल के बारे में मान लीजिए कि कई एक देशों के साथ हमने, अभी सीरिया को हमने बैन किया हुआ है, लीबिया को हमने बैन किया हुआ है। हमारे यहां फर्टिलाइजर की बहुत कमी है। फर्टिलाइजर का जो जिससे बनता है फर्टिलाइजर, चाहे नाइट्रेट हो चाहे फॉस्फेट हो, ये यदि आता है तो उसमें कई एक जगह बैन है। तो जो पोर्ट है, कहां से ये कंसाइनी को दिया गया, कहां शिप पर ये लोड हुआ, कितना केजी लोड हुआ, कहां से ये शिप कहां गया, उस शिप से फिर वो भारत में किस तरह से आया, या भारत में जो लोड हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्लैक मनी की बहुत बात होती है इस देश में। ब्लैक मनी के बारे में 72-73 का जो रिपोर्ट है और 2012 में इसी सदन में जो ब्लैक मनी पर माननीय प्रणब मुखर्जी साहब ने, तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने, जो बाद में राष्ट्रपति हुए, उन्होंने जो व्हाइट पेपर जारी किया, व्हाइट पेपर में उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी जनरेट होने का सबसे बड़ा साधन 85% इस देश का ब्लैक मनी केवल और केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से हुआ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिल है उसके बारे में कभी सोचा है आपने कि हम यहां से भेज रहे हैं, मान लीजिए कि टेक्सटाइल भेज रहे हैं
और वहां से जो है आर्म्स का हमने ले लिया ऑर्डर कि हम जो है स्टील की फैक्ट्री ला रहे हैं जी, आर्म्स खरीद कर ला रहे हैं जी, या कोई भी चीज ला रहे हैं, इसके बारे में इस देश में 1876 से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम रहा। जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं कि ई बिलिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग होनी चाहिए, प्रेमचंद्रन साहब आपकी जानकारी के लिए पूरी दुनिया में 45 मिलियन बिलिंग होती है, लैडिंग होती है। उसमें से पूरी दुनिया, आपने अमेरिका का उदाहरण दे, क्योंकि दूर का ढोल सुहाना होता है। अमेरिका को मान लीजिए कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा, चीन बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा, यूरोप पूरा अच्छा कर लिया होगा। इस सदन की जानकारी के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग लैडिंग का केवल और केवल 2.1% होता है पूरी दुनिया, केवल 2.1% होता है। यदि 2.1% होता है तो हम तो कम व्यापार करते हैं। हमारी इकोनॉमी तो 4 ही ट्रिलियन की है। यूएस की इकोनॉमी हमारे से कितने आगे होगी, यूरोप की कितनी आगे होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना का कितना ज्यादा होगा। वो क्यों नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक? तो इसीलिए हम जितना कर पा रहे हैं शायद इस दुनिया में बहुत कम ऐसा देश होगा करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम बिल पर चर्चा करते हैं तो बिल को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। इस बिल के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, यह समझिए कि सबसे पहले है कि इससे क्या फायदा होगा। पार्टी डिटेल्स मिलेगा कि किसका प्रोडक्शन है, किस कंपनी ने यह प्रोडक्शन किया है। यदि स्टील आ रहा है, मान लीजिए स्टील सेक्टर को ही लेंगे, तो चाइना की किस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है, अमेरिका की किस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है। उसके बाद आएगा कि उसको इंपोर्ट का लाइसेंस किसको दिया गया, यह दूसरा सवाल है। इंपोर्ट के लाइसेंस के बाद जब वो पोर्ट पहुंचेगा तो पोर्ट में जो है उसको यह बताना पड़ेगा शिप ऑनर को, कि शिप ऑनर को यह बताना पड़ेगा कि इस इंपोर्ट के लाइसेंस के लिए यह ऑथराइज था, उसने इस शिप पर चढ़ाया। उसके बाद यह जिम्मेवारी जो है शिप ऑनर की हो जाएगी। और शिप ऑनर के बाद हमारे यहां जो इकोनॉमी होती है, जैसे नीरव मोदी का किस्सा हुआ। नीरव मोदी का किस्सा क्यों हुआ? क्योंकि बैंक की जो गारंटी थी, जिसको एलसी कहते हैं, जिसके आधार पर कि भारत में कोई सामान आएगा या भारत से कोई सामान जाएगा, तो जो बैंक एलसी खोलता है, जो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, उसमें से आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक का परेशानी हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परेशानी हुआ। यह परेशानी के लिए वो कौन सा आदमी है जिसने कि एलसी मंगवाया है, कौन सा आदमी। जैसे गुजरात के पोर्ट में आप कहते हो कि ड्रग्स पकड़ा गया, ड्रग्स किसने मंगाया, हु नोज, नोबडी नोज। और आप फिर भारत सरकार, तो इसमें लैडिंग बिल में जो सबसे बड़ा है कि पार्टी का डिटेल्स आएगा, उसकी पूरी चेन आएगी। क्या ये बिल आने की आवश्यकता नहीं थी? दूसरा है कि कार्गो जो है, कार्गो कहां से कहां गया। आज मैं बताऊं कि कई एक ऐसे कंट्री हैं, जैसे यूएस ने कई एक, रूस को बैन कर रखा है। आपको पता है कि रूस से यदि कई एक सामान यदि जाता है, अमेरिका जाता है, वो कैसे जाता है? तो जो उसकी फ्रेंडली कंट्री है, मान लीजिए कि ब्रिटेन उसका फ्रेंडली कंट्री होगा, सिंगापुर उसका फ्रेंडली कंट्री होगा, तो रूस से वो सामान जो है शिप होकर चला गया सिंगापुर, चला गया वो यूके, और वहां से जो है वो वापस जो है यूएस के रास्ते में चला जाता है। लेकिन जब हम ये बिल लेकर आएंगे, लैडिंग बिल आएंगे, तो उसमें पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी होगा कि डेस्टिनेशन कहां से ये निकला। ये जो है ये दूसरा है। तीसरा है कि कार्गो जो है, कार्गो वो वेट नहीं करेगा। एक सीएजी की रिपोर्ट आई कि यूपीए के सरकार के समय कम से कम 50,000 करोड़ रुपया सालाना केवल लॉजिस्टिक और कार्गो वेट में जाता है। आपको पता है कि आज की डेट में कई एक ऐसे पोर्ट होंगे, क्योंकि पोर्ट सेक्टर में कई एक समस्याएं हैं। जैसे कई एक लोगों ने कहा कि राज्यों का सवाल है, राज्यों का इन्फ्रिजमेंट है, राज्यों के पास पोर्ट है। मुझे कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी परेशानी होती है कि पता नहीं इस देश में क्या होगा। यहां दो चीजें, मेजर पोर्ट है और माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट कौन है? जो भारत सरकार जिस पोर्ट को बनाती है। मैं आपको बताऊं, जैसे यहां दादा स्वागत बाबू बैठे हुए हैं, कलकत्ता का जो पोर्ट है वो मेजर पोर्ट है, और जो हल्दिया का पोर्ट है वो माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट इसीलिए कि वो भारत सरकार ने बनाया,
और हल्दिया का पोर्ट यह है कि राज्य सरकार के सहयोग से बना। मेजर और माइनर पोर्ट का यह फर्क है, माइनर पोर्ट मेजर पोर्ट से ज्यादा बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। कई एक माइनर पोर्ट ऐसे हैं जिनको कि मेजर पोर्ट से उनका कोई कंपटीशन नहीं है, वो माइनर पोर्ट ही बड़ा है। लेकिन डिफिनेशन क्या है, जो केंद्र बनाएगी वो मेजर पोर्ट है, जो राज्य बनाएगी वो माइनर पोर्ट है, और उसका जो लेजिस्लेशन है वो भारत सरकार एक का तय करेगी, एक का राज्य सरकार तय करेगी। जैसे अरविंद सावंत जी मेरी टाइम बोर्ड की बात कर रहे थे। लेकिन जो कस्टम एक्साइज है, जो 5 किलोमीटर के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर है, जाने और अनजाने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत सरकार का ही अधिकार है। भारत सरकार ही उन चीजों को देखेगी। भारत सरकार ही, मान लीजिए कि कई एक ऐसे हैं, पनामा कैनाल से लेकर स्वेज कैनाल तक हमेशा इंटरनेशनल लड़ाई होती रहती है। इंटरनेशनल लड़ाई होती है तो कौन सा कार्गो कहां जा रहा है, कहां आएगा, यह डिटर्मिनेशन कौन करेगा? भारत सरकार जो है उसको सिक्योरिटी कैसे देगी? तो इस आधार पर जो वेटिंग है, कई एक कार्गो जो है कई एक पोर्ट पर हमेशा जो वेट करते रहते हैं, इस एक्ट के बाद, लेडिंग एक्ट के बाद उसमें एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। मैं केवल 2-4 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि बोलने वाले बहुत लोग नहीं थे, इसीलिए। इसके बाद टर्म्स ऑफ पेमेंट, मैंने जैसे कहा कि एलसी यदि खोलते हैं, कई एक बैंकों के साथ जो है कि सामान यहां आ जाता है और सामान लेने को तैयार होते हैं, या क्वालिटी जो है उसकी इतनी खराब होती है, जैसे हम ही यहां से भेजते हैं तो मान लीजिए यूएस किसी चीज को रोक देता है, सिंगापुर किसी चीज को रोक देता है, यूरोप किसी चीज को रोक देता है कि हम उस तरह का नहीं कर सकते हैं, तो जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है वो पहले से निर्धारित होगा। वो सीपर पर, कंसाइनी पर जो है इस लेडिंग एक्ट के बाद, क्योंकि ये बिल जो है वो इंटरनेशनल एक्ट 1878 का जो हमने साइन किया है उसके आधार पर ये बना है, तो वो तय हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसमें डेवलपमेंट है कि जो बिलिंग है, बिलिंग जिनके साथ हमारे आज के डेट में क्या हुआ है कि 3-4 एग्रीमेंट भारत सरकार ने लगातार किए। एक तो बायलैटरल एग्रीमेंट हमने स्टार्ट किया है कि एक देश के साथ दूसरे देश का क्या रिलेशन, बस 4-5 मिनट में खत्म करूंगा सभापति महोदय केवल। तो जो उसका जो बायलैटरल है, बायलैटरल में हमने मान लीजिए कि किसी के साथ टैरिफ में किसी को कंसेशन दिया या किसी के साथ हमने सहयोग किया, जैसे नेपाल हमारे साथ है, भूटान हमारे साथ है, हम इंडोनेशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, कंबोडिया के साथ पूरा बिजनेस करना चाहते हैं। कई एक ऐसे कंट्री हैं, जैसे नेपाल एक ऐसा कंट्री है, भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास पोर्ट नहीं है, तो इनलैंड वाटरवेज के साथ जब उनके हम सामान को ले जाएंगे तो वो बिलिंग जो है वो महत्वपूर्ण होगा कि ये मेड इन नेपाल है, मेड इन भूटान है, और इस तरह से कई एक कंट्री में जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, लोग उसको, जैसे बांग्लादेश के साथ टेक्सटाइल सेक्टर में आपको पता है कि 10% कंसेशन है, इसीलिए हम उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। केवल अंत में सभापति महोदय, इस सदन में चोला बंद से लेके लैंग्वेज के ऊपर बहुत बातचीत हो रही है। ये देश संविधान से चलता है, आर्टिकल 343 से लेके 348 तक नेशनल लैंग्वेज क्या होगा, बातचीत करने का लैंग्वेज क्या होगा, तमिल की क्या स्थिति होगी, हिंदी की क्या स्थिति होगी, अंग्रेजी की क्या स्थिति होगी, इस देश में पहले से निर्धारित है। इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि डीएमके चुनाव हारने के डर से, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आधार पर कभी भी लैंग्वेज की बात नहीं करे और सेंटिमेंट को खत्म नहीं करे, क्योंकि आर्टिकल 15 में किसी भी कास्ट पे, रिलीजन पर, रेस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। और संविधान को, यदि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को डीएमके खत्म करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी में जब तक मोदी जी की सरकार है हम उसको खत्म नहीं करने देंगे, हम मुकाबला करेंगे। Try it. Coming elections, use that as the plank. Use that as the plank in 2026 elections. Try it and see if you can. Supriya Sule, please. Thank you, sir. I stand here in support of this bill. My colleague from the Treasury bench, I think, has not heard the earlier speeches. Most speakers who have spoken since the debate has started have specifically supported the bill. So I think it's an illusionary information that he has spoken on, that people are objecting to this bill. I think Sonwalji, in his opening line, has made it very, very clear from what he has explained in the bill that he is not making any drastic changes in the bill. It is just renewing, changing of name, and that and the year, and there has not been much changes is what he has said.
in the bill when he opened his speech. So my colleague and friend Nishikant Dubeji was under an illusion that the entire opposition is in a very combative mode against this bill. Let me with full humility say that the entire opposition with full humility has always in support of this bill, because we understand that this is not some great policy change that they have done in this. Well, was there opportunity to do it? Of course there is. There is always an opportunity to improve. But I would like to ask specific questions, since it came from the Treasury bench, that they have said they have made it far more transparent than it was. I would like to ask the Honourable Minister in his reply to explain to us the comparison of earlier it wasn't transparent and today it is transparent. Like a small example they gave, that if it's one of the countries you don't want to work with or you don't have trade with, and the goods from that country come to our country, the country of origin would always be known, and then we can take a decision. So since this is a very serious policy comment that has come from the Treasury bench, I would seek a clarification from the Honourable Minister of what is the status before and what it is today. Well, in this maritime trade that we are talking and maritime commerce, well, India, in this entire global trade, we have a large seashore. And from the states where you come from, Tamil Nadu, where I come from, Plain Chandraji comes from, we have a big coast. And we have been, over the years, we have all tried to develop all our ports to generate more trade and more jobs for all our people. Well, given the economy of the country today, the rupee where it stands today, imports is something that this government should be very, very concerned about. As long as we are exporting, we are in a very good position. But I'm not sure what really levels of trade are we doing right now. I would like to bring a small thing to the Honourable Ministers. Many points have made that there are new provisions which will to make ease of doing business. Now, ease of doing business actually was a global bank word. That ease of business has even stopped. So their government is still using it selectively. When it suits us, they say it's ease of doing business, we have done better, and there are some days they say, oh, it doesn't even matter whether we are a part of ease of doing business. But I would like to ask that, is there an appeal authority? Suppose now they have made this change, what he's saying is being very transparent. Any bill when you bring in, there have to be checks and balances, sir. I want to ask, because there is a comment in the statement of objectives, number 3 point, they said the new provision is proposed to be incorporated to empower the central government to issue directions to carry out provision or proposed legislation. What Mr. Dubey said about minor and major ports, I agree with him completely. These are two completely different projects of state and country, cooperative federalism, nobody interferes in each other. But when you go into international waters, clearly central government takes over. I mean, every government is aware of that. And in cooperative federalism, I want to understand how have you empowered yourself further? So what is the difference? Because in your opening, there was not much of difference brought in. So how are you empowering yourself? Then are you, what worries me is most decisions this government has taken has actually stopped cooperative federalism, like from universities. In the education university, so much control from this government has started interfering into the states. So my first concern is that are you taking away power again under some surreptitious way from the states? So that's my concern. And I would like to ask the Honourable Minister one question, that in this you have said that there's an appealing authority. Now in this appealing authority, who will be this appealing authority, because of the specific word that they are empowering themselves? So now, suppose I will give you an example which has come in the newspaper, sir, I can authenticate it. There was a company which from Visakhapatnam which was importing shrimp feed from Brazil. So it was coming from Brazil into India. It came to Visakhapatnam, it landed with all the proper papers, and this has come in the newspaper, I can easily authenticate it. And Interpol told the government that there were drugs on this ship. Now, the authority obviously seized it. After seizing, the company got a notice. For 9 months, this which is an Indian company, was battling the Brazilian company and the Indian company. Both companies were willing to go through any tests, they had opened their offices completely, and they had denied everything and were willing to open any inquiry. After full 9 months, the government realized and gave them a clean chit.
Now it's international company in Brazil, an Indian company importing shrimp, what is it called? Shrimp feed. Now 9 months this company got affected. They had to pay huge tariffs because it was just parked there for 9 months and their business collapsed for 9 full months. Look, if they're a large organization, maybe can afford it. But small businesses who are trying to make India proud, Atmanirbhar Bharat, we're trying to do so many things to work betterment with other countries. What intervention will your government do in a time-bound manner? 9 months is a long period for that company. So how can you help or intervene? What is in this, is there anything like goods or damages? When goods get damaged, who will take ownership of it? Government is going to put their hands up and said, oh, the Interpol has told us, so we can't do anything about it. So can we have a time-bound manner? Can we have, there's so much technology available now. So can we have a quasi-judicial system here in a time-bound manner so that anybody who has such challenges, it could even be real. Like Mr. Dubey said, so many drugs are coming into India. My God, it's actually alarming. And I think this whole House should together do something for this fight against drugs unanimously. So what would you do? Because most drugs are not made in India, they're imported. So what are you doing in this bill to stop any drugs entering from India? I think that's what we expect from this Honorable Minister. So can you tell us, or even these things that are happening in the dark net? Mr. Dubey said that the e-billing is not something that is practical or it's been done. My question to the government is so much, which even Mr. Premchandran said, with so much technology coming in, which you can call it a disruption or you can call it to help us. What technology, could have we not used more technology in this leading bill? So can you specifically tell us how you're going to protect the Indian businessmen in this? Because this bill has to be for our Indian people. So I urge you to seriously consider, if required, you can take all this feedback, strengthen the bill. We support it even in the case it is. But we hope that you will protect every Indian businessman because he or she or that company is India's pride. Like you said, you are proud about India. We are proud about every enterprising businessman in India who's trying to create and generate wealth and opportunity for Indians. So I hope in this entire international game, no Indian gets compromised in the future, and you will take up ownership and lead from the front for the Indian businessmen who are helping maritime commerce. Thank you. Thank you. Sri Anil Desai. Thank you. Thank you, Chair. Sir, I've gone through the Indian Bills of Lading Act 1856 now, which has been changed to Indian Bills of Lading 2024. And as has been said by earlier speakers, that pro and cons of the bill, but I think there is hardly anything to speak against the bill, whatever the contents of the new bill is there, except for few facts. I would like to ask the Honourable Minister regarding very first point that central government, like Section 5, central government may give such directions as it may deem necessary for carrying out all or any provisions of this Act. Now, central government has been there in the Act as it is legislated in the Parliament, and what is that specific Act or provisions where central government will come or put intervention or play a role. That needs to be specified. I think Honourable Minister is giving his attention here. Sir, another thing that the speech which was made by Honourable Nishikant Dubeji, that he came out with a lot of knowledge it given to for enlightening the House, I would say. That bill of lading, what it was earlier, how the contract went, and how the improvisations have come, and how specific the best to everyone, like shipper, the ship owner, and the consignee. Now, what are those provisions which he has said? Can Minister elucidate them while answering? Bill of lading, as it was there in the colonial times, it is a contract between the freight shipper, that is the owner of the ship, and the consignor, the sender of the goods. And the receiver of the goods is also mentioned on endorsing that document.
It's a valid document. After that, the ownership used to transfer. Here in the bill, it is only mentioned, it is only main fact of the thing that rights and liabilities are transferred to the consignee when the bill of lading is incorporated. Besides that, everything is there what it used to be there since 1856. Now, whatever Mr. Nishikant Dubey has said, that letter of credit and all that, that also stands because here insurance plays the main role in the entire transaction. And insurance claims which arise out of disputes between the consignee and the consignor and the shipowner per se, that whatever happens in between in transit, for that insurance, that the entire transaction is covered under insurance, marine insurance. And I think one of the speakers, I think Gangopadhyay ji, when speaking, he said multimodal contract is also into operation of this bill. Can you put or shed some light, Mr. Minister, while replying to this bill, that what kind of multimodal contract is covered? Because this is from port to port, and despite that any other multimodal, that any major ports or minor ports are covered in that, in the international waters. And from there onwards, whether the road or by motor or any other transport, that is also covered in the bill of lading. Any specific articles or any sections are meant for that. Now coming to the export and import. Now how we find that current account deficit, that is the major thing. Our exports are not growing. Why our exports are not growing? Maritime business is the main business by which we earn a lot of foreign exchange, the major foreign exchange. Now why we have gone down as far as exports are concerned? Export policies are not supporting, or they are not conducive to the environment where the exporters try to earn some laurels for the country, or anything like that, that freight charges which have gone up, that is becoming detrimental to the health of the maritime business. Now containers, I'm just coming back to my state of Maharashtra, where I'm coming from, Mumbai. So in Mumbai port, in JNPT, now if you see the congestion and kind of the business activity is being conducted there, the infrastructure itself has reached the brink of collapse. I mean, have we thought over it? How do we go when it is not sufficient or it is not in proper order? We have gone for Vadhavan also. As my colleague Arvind Sawant has raised a very valid point, that draft which was needed and the reclamation which was to be done in Vadhavan, why the sand had to come from different state, Gujarat? Why was it not taken from the Mumbai port itself? Can Minister enlighten on this fact? There are a lot of things, lot of scope and lot of potential for maritime business in India to grow. Exporters are craving for that. But is the condition or is the environment conducive to see that exports rise and exporters are given that kind of momentum by the government? If questions are answered by the Minister, I think, and so Priya Suleji, what question she asked, that these disputes which come in transit, the government in the international central government has a role to play. Why this delay, if anything comes up and which comes in the way of growth of business for the exporters and for the people who are completely dependent on that kind of business? What is the fate in front of them? What is the future for maritime business? In this recent budget, the finance minister has allocated some 25,000 crores for the maritime business in India. I think that provision itself is not enough to see that maritime business, the way it is conducted overseas and other countries. If we have to match, if we are going, as Nishikant Dubey ji has said, that from 4 trillion we are comparing with the US, which got more than 30 trillions of economy. If we are to match, can we go without it? If we do not have that kind of infrastructure for the maritime business, where do we go and what is the scope left for India? Please conclude. Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak on this. Shri Darshan Chaudhary.
आपने सदन में लॉर्डिंग बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस सदन के समक्ष इस वहन पत्र विधेयक 2024 को प्रस्तुत करते हुए गर्व अनुभव कर रहा हूं। यह विधेयक हमारे देश की व्यापारिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार लाने जा रहा है। इस बिल के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो समुद्री व्यापार में वस्तुओं की शिपिंग और स्वामित्व हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। अब तक हम इस बिल के आधार पर काम कर रहे थे जो 1856 में बना था, जो आधुनिक व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था। इस नए विधेयक के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक अद्यतन और पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। मैं अभी हमारे विपक्षी साथी जो बोल रहे थे कि इस बिल से न रोजगार बढ़ेगा, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसी कहावत हमारे देश में चलती आ रही थी। और मैं तो मोदी जी का धन्यवाद इस रूप में देना चाहता हूं कि वर्षों की गुलामी को दूर करने का जो प्रयास, क्योंकि पत्थर की छाती के आगे तूफान स्वयं रुक जाते हैं और अविचल विश्वासी के आगे भगवान स्वयं झुक जाते हैं। इसके मुख्य बिंदुओं में हमारे अधिकारों का हस्तांतरण किया गया है। इसमें यह विधेयक स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि इसमें वस्तुओं के स्वामित्व का हस्तांतरण कैसे होगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि चाहे वो कंसाइनी हो या इंडोर्सी हो, इनको सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे। इसके पहले ये कानूनों के जंजालों में फंसे हुए थे, उनसे मुक्ति मिलने का काम इस विधेयक से मिल रहा है। यह न्यायिक प्रमाण देने वाला बिल है। इस बिल में एक कानूनी प्रमाण पत्र के रूप में इसको स्वीकार किया जाएगा, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में इसे निर्णायक प्रमाण पत्र माना जाएगा। इस बिल में अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे कि आधुनिक तकनीकी की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विल ऑफ लैंडिंग इसको हम कह सकते हैं। यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक बिल्स ऑफ ई बिल जिसको कहेंगे, कानूनी मान्यता जिसको प्रदान की गई है, यह डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा, व्यापार की गति को तेज करेगा और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करेगा। यूनाइटेड नेशंस के मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरेबल रिकॉर्ड्स के अनुसार MLETR के अनुरूप भारत भी अपने व्यापार दस्तावेजों को डिजिटल बनाने की दिशा में अग्रसर होगा। इस बिल के फायदे में व्यापार में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसमें कानूनी विवादों में कमी आएगी और बिल में अब निर्णायक प्रमाण के रूप में मान्य होगा। इसमें डिजिटलाइजेशन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और इसमें पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा, क्योंकि इसमें कागजी प्रक्रिया कम होगी। मुझे गर्व महसूस होता है, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। 7,500 किलोमीटर की इसकी टोटल समुद्र की लंबाई है और उससे न केवल समुद्री व्यापार आयात बढ़ेगा, और अभी जो ड्रग्स के मामले में जो विगत कांग्रेस की सरकार, उसके पहले की सरकार नियंत्रण नहीं कर पाई थी, इस बिल के आने के बाद उनमें नियंत्रण लाने का काम करेगा। आत्मनिर्भर भारत, हमारे मित्र बात कर रहे थे, तो मैं कहूंगा चाहे वो रोजगार की बात हो, डीजल पेट्रोल की खपत कम करने की बात हो, और उससे बड़ी बात, क्योंकि समुद्री व्यापार जब होता है या शिप जब चलते हैं तो खर्चा भी कम लगता है। यह विधेयक न केवल भारत के समुद्री व्यापार को आधुनिक बनाएगा, बल्कि वैश्विक व्यापार मानकों के अनुरूप भी काम करेगा। यह डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे न केवल समुद्री दिशा में, जैसे हमारे माननीय मोदी जी ने जो बनारस में एक मॉडल तैयार करने का काम किया है, छोटे छोटे नदियों पर जिनका पाट बड़ा है, उन पर भी छोटे क्रूज चलाकर उनको
न केवल उनके पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और मैं भी नर्मदा मैया के क्षेत्र से आता हूं, मेरे यहाँ भी नर्मदा मैया का चौड़ा पाठ है, चंबल मैया का चौड़ा पाठ है। मैं ये निवेदन और इस विधेयक के माध्यम से उसमें सरलीकरण भी होगा कि ऐसे छोटे छोटे पोत चलाकर और स्थानीयता को महत्व देते हुए ऐसे जहां पर समुद्र की सीमाएं भी नहीं है उस प्रकार की भी इस व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और इन पार्टों में ऐसे जो मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल की बात, आत्मनिर्भर भारत की बात, इसलिए मैं कहता हूं कि इस बिल से हम केवल, आपने कहा, हम श्रेय लेने का काम नहीं कर रहे। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, कहने से करना भला होता है और हम वो करके दिखा रहे हैं। ये मोदी जी का भारत, जिस भारत के बारे में सपना देखा गया था, चाहे नास्त्रेदमस की घोषणा आपको ज्यादा अच्छी लगती होगी, आप यदि उनको देखेंगे, नास्त्रेदमस की घोषणा में ये लिखा है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, कई साल पहले की थी, कि जो देश 3 तरफ समुद्र से घिरा है, 1 तरफ पहाड़ से घिरा है, 2024, 25 और 21वीं सदी में जाकर वो विश्व का नेतृत्व करेगा। और मैं मोदी जी के नेतृत्व को इसलिए सराह रहा हूं, अब मेरा भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का मॉडल तैयार हुआ है, हम 2047 में इन्हीं नीतियों के कारण, इन्हीं बड़े बड़े परिवर्तनों के कारण, और जो छोटे छोटे बिल, जिनको छोटे छोटे कानून जो प्रामाणिक भी नहीं थे, काम के भी नहीं थे, अंग्रेजों के जमाने के चल रहे थे, उनको निरस्त करने का काम हमारे माननीय मोदी जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इस बिल का पुरजोर तरीके से समर्थन करना चाहता हूं और विपक्षी मित्रों को बताना चाहता हूं कि विकसित भारत का मॉडल है, क्योंकि ये भारत यदि असली स्वरूप में दिखाई दे रहा है, जो विवेकानंद का सपना था, उसको पूरा करने के दिन आ रहे हैं। और इन बिल के माध्यम से हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद। Thank you. Honorable Minister wants to present the report. Please. Sir, I rise to present the 7th report of the Business Advisory Committee. Thank you. Professor Saudarai. Thank you, Chairman, sir. I rise to speak on the Bills of Lading Bill 2024. I don't know why it has not been corrected to 2025. Now, I have a basic objection to the bill. When it was introduced in the House, the Minister will remember, I objected to the introduction of the bill because I said it was superfluous. It was not necessary. And it is stated in the statement of object and reasons, though the substantive aspects of the said Act continue to remain relevant, being a pre-independence statute, it is imperative that the provisions of the said Act required to be revisited without changing the substance or spirit of the Act, so as to bring it in line with modern legislation. The Minister has said that this is the same as the previous legislation. This is superfluous. I think the Ministry has no work. Should they bring legislations unnecessarily? Before I speak on the bill, I have a small request to the Minister. He is from Dibrugarh, on the banks of the Brahmaputra, mighty river. He is also from the land of Lahe Lahe, which is slow pace. Now my request is this, that give your Minister of State, Shantanu Thakur, some chance to speak in Parliament. He is sitting every day, taking notes, but he is not getting chance to speak. He is from Bengal and he deserves a chance in your ministry. Please come to the bill. Sir,
It is to the point. Mike. Minister want to intervene. Sentiment of the people of Assam. This is not good at all. Huh? We are equal to each other. We are together. We are always living like a family. But why you are saying this kind of words? Why don't you give him chance to speak in? No, that is a different part. That's a different part. He is always getting the opportunity. He is making the statement. It is a time to time. He is also taking part in the different businesses. Yes. So you have Please to overlook it. Okay. Please. Professor, you continue, please. Sir, now we have to consider the shipping bill. We have to consider shipping industry. Shipping industry has undergone terrific changes in the last 50 years. Now there are no more small ships. Ships are all container ships, and they are 2 lakh, 3 lakh tons. The bigger ships are oil tankers, which bring petroleum from one country to the others. Unfortunately, though, we have a big coastline, more than China. 34,000 miles of coastline. But our coast is not indented. That is, there are not enough inlets. As a result of which, we do not have big container ships coming to our ports. Sir, you are from Chennai. You know that Madras port, you have to have a breakwater for maintaining the port. We need deep water ports. We have built a new, Cochin is a big deep water, so is Vizag. Earlier the government built new ports, where in Bombay they built the Jawaharlal Nehru Port Trust. Paradip was built by the government. Now all new ports are going to one group of businessmen called Adani. New port in Vizinjam, Kerala, that belongs to Adani. The new port in Damra, in Odisha, belongs to Adani. And the biggest port in private sector is Mundra port. Mundra port has the report of maximum drug seizure in the port. That also belongs to Adani. So we have a change in the total perspective of the shipping industry, which I want to point out. Now, why is the minister bothering about these small changes in bill then? I spoke during the introduction. I said it's not necessary. And see, one bad point is that they are making legislation and taking all the power in the government's hand. They have said government has repealed the Indian Bill of Lading Act 1856 without introducing any significant improvements in maritime trade, except for centralizing power under the Ministry of Port and Shipping. You read with me the bill, sir. The bill says, the bill says the central government may give such directions as it may deem necessary for carrying out all or any of the provisions of this Act. That means central government has overriding power. It's not democratic. The state should have been given some power in the matter of ports. The shipping industry could have some power. There could have been a National Shipping Council. That has not been done. We must see how to develop our ports. We must build big, deep water seaports. We must have big container ships. Otherwise, we can't compete with China. People here speak of competing with China. We are not even 5 trillion.
China is 19 trillion, their GDP, and USA is 32 trillion. Where are we? How do we catch up with China? China has a smaller coastline than us, but they're huge. The Shanghai port, the huge capacity. We must remember that we must hasten to catch up with these countries. Government having more power over the ports is not important. We must encourage the shipping industry. We must encourage the shipbuilding industry. We must encourage the shipbreaking industry. Unfortunately, we are falling behind in all these things. Minister is a good man, but he needs dynamism and a 10-year-old and a 50-year-old perspective as to how to develop the shipping industry, which has fallen behind. Small countries, see the Dutch, they have Rotterdam port. It's equivalent to 4 or 5 ports of ours. Small countries have big ports. We haven't built big ports. I will request the minister to take up the matter of big ports. I have nothing to say against the bill, but I'll tell you that let the minister come to Parliament with more positive legislation, not this minor tinkering legislation. Thank you. This tinkering legislation can be done in Atal Tinkering Laboratory. Thank you, sir. Thank you. Sri Hanuman Beniwal. सभापति महोदय, सदन में आज वैन पत्र विधेयक 2024 पर चर्चा हो रही है। मैं इस अवसर पर वैन पत्र विधेयक 2024 के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। सभापति महोदय, ये विधेयक किसी वैन पत्र में नामित पारिस्थिति तथा किसी वैन पत्र के पृष्ठांकित के बाद में अधिकारों और दायित्वों के अंतरण से संबंधित है। जिस वैन पत्र में वर्णित माल की संपत्ति पारिस्थिति या पृष्ठांकित होने के कारण चक्रांत किया जाता है। इस विधेयक में ऐसे कई प्रावधान जो व्यापारिक व्यवस्था, माल ढुलाई और आर्थिक प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे, लेकिन इस विधेयक से सरकार की नीतिगत खामियां भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, जो उद्योग जगत और छोटे व्यापारियों के लिए हितों के विपरीत है। सभापति महोदय, विधेयक की जटिलता और अस्पष्टता। सरकार द्वारा प्रस्तुत ये विधेयक अत्यधिक जटिल और अस्पष्ट भाषा में लिखा गया है। इसमें निहित कई प्रावधान स्पष्ट नहीं है और कानूनी दाव पेंचों में उलझे हुए हैं। ये स्थिति विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमई, लघु व्यापारियों और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए चिंता का विषय है। यदि विधेयक का क्रियान्वयन जटिल रहेगा तो इन व्यापारियों को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। सभापति महोदय, व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए खतरा। वैन पत्र विधेयक 2014 को लागू करने से पहले व्यापारी संगठनों, परिवहन उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श लेना आवश्यक था, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई उचित कदम नहीं उठाया। माल परिवहन वैन पत्र की पृष्ठांकित और नामित परिस्थिति की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के बजाय सरकार ने इसे अत्यधिक नियमों में जकड़ दिया, जिससे व्यापारिक लेन देन में अनावश्यक रुकावटें उत्पन्न हो सकती है। सभापति महोदय, इसके अलावा छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए विधेयक अनुचित दबाव और कानून जोखिम को बढ़ावा देगा। आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि बड़े कॉरपोरेट घराने इस कानून का फायदा उठाकर छोटे व्यापारियों पर अपनी शर्तें थोप सकते हैं, जिसमें आर्थिक असमानता और बाजार में एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा। सभापति महोदय, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की अनदेखी। इस विधेयक से परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माल के स्वामित्व के हस्तांतरण में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि इस परिवर्तन का परिवहन कंपनियों, ट्रक मालिकों और गोदाम प्रबंधकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा कैसे होगा, न्यायिक प्रक्रिया कैसे चलेगी और छोटे ट्रांसपोर्टर को इससे बचाने के लिए क्या उपाय किए गए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर सरकार के पास नहीं। सभापति महोदय, किसान और कृषि उत्पादों पर प्रभाव। यह विधेयक किसानों को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि कृषि उत्पादों की ढुलाई, भंडारण और व्यापार में वैन पत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि किसानों
और कृषि व्यापारियों के लिए माल की स्वामित्व परिस्थिति जटिल हो जाती है, तो पहले से ही मंडी और व्यापारिक नियमों से जूझ रहे संकट में और फंस जाएंगे। सभापति महोदय, विवाद समाधान तंत्र का अभाव। इस विधेयक में कोई ठोस विवाद समाधान प्रणाली का उल्लेख नहीं है। यदि वैन पत्र के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा कैसे होगा? यह स्पष्ट है, इससे व्यापार जगत को कानूनी प्रक्रिया में उलझना पड़ेगा, जैसे आर्थिक गतिविधियों की गति धीमी हो सकती है। सभापति महोदय, सरकार ने इस विधेयक को बिना व्यापक चर्चा के संसद में पेश किया। इससे स्पष्ट होता है कि विधेयक सरकार की हड़बड़ी और दूरदर्शिता का प्रतीक है। सरकार द्वारा लाए जा रहे कई विधेयकों की तरह ये विधेयक भी एक प्रबंधन के बजाय नियंत्रण की मानसिकता जैसे। सभापति महोदय, जब सरकार लगातार बनी थी 19 और अब आपके 24 के अंदर 14 के अंदर, तब आपने हमेशा एक वादा किया था कि जितने भी अनावश्यक विधेयक है, बिल है, उनको हम खत्म करेंगे। लेकिन यहाँ तो बिल पे बिल लाए जा रहे हो आप, और मुझे नहीं लगता कि इन बिलों का औचित्य है। जो बिल लाए जाने चाहिए देश हित के अंदर, उन बिलों को सरकार लाए तो ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं बिल का विरोध करता हूँ। थैंक यू। श्री विशाल पटेल। इस अवसर के लिए धन्यवाद सभापति महोदय। 1856 के बिल को रिप्लेस करने के लिए इस बिल को लाया गया है। लगभग 175 पौने 200 साल पुराना ये बिल था। उसकी भाषा अलग थी, तो नया बिल लाना जरूरी था, मोर रेलिवेंट टू द प्रेजेंट टाइम्स। मैरीटाइम ट्रेड आज ट्रेड के 80% ट्रेड ये मैरीटाइम ट्रेड से होता है, ये सब जानते हैं। सर, भारत अकेला 1.3 बिलियन मैट्रिक टन का कार्गो सालाना एन्युअली एक क्रूशियल रोल ग्लोबल सप्लाई चेन में करता है। लेकिन ये आउटडेटेड रेगुलेशंस थे, उसकी भाषा अलग थी, बदलना जरूरी था, ये मानता हूं, और ये बदलाव लाने के लिए ये बिल लाया गया, ये भी हम समझते हैं। लेकिन सरकार ने एक बहुत अच्छा मौका गवा दिया। सिर्फ जल्दबाजी में ये बिल लाना था। नया बिल लाने के लिए कुछ अभ्यास करने की जरूरत थी। अगर अच्छे से अभ्यास करके नया बिल लाते हैं तो शायद शिपिंग कंपनियों के लिए भी और किसानों के लिए भी इस बिल एक अच्छा बिल बन पाता था। The colonial bill was drafted assuming, of course, that large corporations alone will be exporters. Sir, times have changed. समय बदल गया है। अब छोटे छोटे किसान भी खुद अपना माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगली में कई किसान हैं, अंगूर, अनार, हल्दी ये उगाते भी हैं, खेती भी करते हैं, और ये माल खुद एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी करते हैं। सर, अगर इस बिल में, अभी बहुत लोगों ने बताया, मैं भी बता, ई बिल ऑफ लेडिंग अगर ले आते तो फायदा होता, सामान्य लोगों का फायदा होता। सर, लगभग 1 करोड़ बिल ऑफ लेडिंग सालाना इश्यू किए जाते हैं। कम से कम $3 बिलियन की बचत ई बिल ले आते तो हो जाता। किसने कहा सिर्फ 2% ई बिल पे व्यवहार होते हैं, लेकिन अगर हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम देश को हम आगे ले जाना चाहते हैं। सर, डिजिटल अपन देखते हैं, यहां भी डिजिटल में सांसद का सिग्नेचर भी डिजिटल करते हैं, डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। ये सरकार सब चीज में लीडर बनना चाहता है, देश को सिखाना चाहता है, तो फिर ये बिल लाते हुए ई बिल ऑफ लेडिंग लाना जरूरी क्यों नहीं समझा? सर, गुड्स के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है बिल ऑफ लेडिंग के ट्रांसपोर्ट की। माल तो चढ़ा दिया, अब ये जो बिल ऑफ लेडिंग सामने वाले इंपोर्टर तक पहुंचाना है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। एक 2 पर्याय होते हैं उसके पास। एक तो कुरियर सही है, बिल ऑफ लेडिंग आगे भेज दो, रास्ते में बिल कुरियर खो गया, चोरी हो गया तो सारा माल चला गया। दूसरा ऑप्शन होता है कि सरेंडर करना शिपिंग कंपनी को। सरेंडर कर दिया तो सर कल अगर हाई सी सेल करना हो, माल ट्रांसफर करना हो, तो अपन कर नहीं पाते। तो अगर ई बिल ले आते इस प्रोविजन में तो बहुत फायदा हो जाता। सर, इन टुडेज टाइम they talk of digital economy. I wonder why it is very surprising that they themselves could not bring this in. सर, ये रॉटरडैम रूल जो 2008 के बने थे, रॉटरडैम रूल्स भी जो इन्होंने इसमें अडॉप्ट करने चाहिए थे, उसमें भी ई बिल ऑफ लेडिंग की बात की गई है। सर, हाउ मच लॉन्गर विल द सिंपल फार्मर हैव टू डिपेंड ऑन लार्ज एक्सपोर्टर्स टू सेंड अब्रॉड हिज गुड्स? How much longer does he have to share his price of goods with the middleman? And how much longer does he have to wait for the government to bring in provisions where he himself can go ahead and export? अगर मेरे सांगली का एग्जाम्पल लोगे तो मेरे सांगली मनेराजू गांव में एक किसान है जो अंगूर की खेती करता है, संजय जमदाड़े। उसने हिम्मत की,
he dared himself to try and export his own grapes. उनका खुद का अंगूर एक्सपोर्ट करने की उसने कोशिश की, चेष्टा की। सर, जिस शिप में उसका कंटेनर या अंगूर के साथ चला गया था, उस शिप के इंजन में आग लग गई। शिप के इंजन में आग लगने के कारण उसका जो अंगूर का माल था, उसका रेफ्रिजरेटर सिस्टम पूरे शिप का बंद हो गया और उसका अंगूर खराब हो गया जब तक वो पहुंच जाता। अब सर, शिपिंग लाइन के इंश्योरेंस कंपनी पे हमने जब उस बेचारे ने जब तकरार की, कंप्लेन की, तो शिपिंग लाइन कहती है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि गलती शिपिंग लाइन की नहीं है, गलती कैप्टन की है, कि कैप्टन की गलती के वजह से आग लगी और तब ये माल खराब हुआ। अब ये बेचारा कैप्टन से पैसा वसूल करने कहां जाएगा? सर, इस बिल में कोई प्रोविजन ही नहीं है, आर्बिट्रेशन की प्रोविजन नहीं है। अगर ऐसे बेचारे संजय जैसे किसान खुद अगर कोई कोशिश कर ले, इफ दे गो देयर, दे एक्सपोर्ट एंड देयर इज अ बिग इशू, हु डू दे गो टू? So shouldn't this bill have provisioned for these kind of incidents or similar incidents that common farmers who are trying to become exporters themselves are going to face? So the bill goes on to vaguely talk about empowering the government to take decisions or for enforcing the provisions. What provisions? सर, ये पूरा बिल का इनका पर्पस इन्होंने बताया है कि पर्पस लाए हैं बिल सिंप्लीफाई करने के लिए, और इतना वेग प्रोविजन डाल देते हैं, सिंप्लीफाई नहीं किया। इस बिल को ये और कॉम्प्लिकेट करने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, आई वुड लाइक टू रेकमेंड, ये बोलना है तो I would like to recommend to the government that they bring in a policy of integrating the BOL with the temperature tracking logger to ensure both importer and exporter get real-time updates on the quality of their shipments. Moreover, dispute resolution mechanism needs to be worked as simple farmers like Sanjay cannot fight international disputes. This demand is most logical, falls in line with the Hague Rules of 1926, which set the foundations for the carrier responsibilities. The fact that we aspire to achieve 2 trillion in total exports encompassing both goods and services by 2030, but in reality India only contributes 2.5% of the global seaborne trade. We can only achieve our aim when domestic policies are truly aligned with the realities faced by the new India and its aspirations, and India where farmers dream to export and compete with MNC giants because they know the world awaits their arrival. Thank you, sir. Hereby I oppose the bill. Sri Hemant Savara, please. Thank you, sir, for giving me this opportunity. मैं लैडिंग बिल जो इंट्रोड्यूस किया है सरकार ने, उसका बहुत स्वागत करता हूं। लैडिंग बिल के तहत जो डॉक्यूमेंट बनेगा, मुझे लगता है कि इट्स अ वाइटल डॉक्यूमेंट इन शिपिंग that serve as receipt, contract and document of title for good being transported. It is used to ensure that goods are handled, delivered and legally transferred correctly. It is the key to unlocking international logistics. मैं हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी को और पोर्ट मिनिस्टर मिस्टर सोनोवाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट वाधवन पोर्ट जो पालघर में आ रहा है, वो इंट्रोड्यूस करने के लिए, और जिसका उद्घाटन उन्होंने खुद स्वयं आके किया। पोर्ट मिनिस्टर सोनोवाल सर खुद 3 बार वहाँ के पूरा जायजा लिया, और मुझे लगता है कि ये लैडिंग बिल इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि वाधवन पोर्ट जो आ रहा है उसके तहत जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो पूरे इट विल चेंज द इकोनॉमी ऑफ नॉट ओनली पालघर बट आल्सो इंडिया। मुझे लगता है कि जो पालघर डिस्ट्रिक्ट का जो कोस्टल एरिया करीब 112 किलोमीटर का है, पोर्ट पूरा समुद्र में बन रहा है 1500 हेक्टेयर में। उसके लिए डेडिकेटेड रेलवे है, डेडिकेटेड हाईवे है, रेलवे है, दहानू नासिक रेलवे भी बन रही है। कनेक्टिविटी जो और पैदा हो रही है वो समृद्धि की तरह मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे को भी कनेक्टिविटी दी जा रही है। उसके आगे हम देख रहे हैं कि वाटरवेज भी वहाँ पे कनेक्टिविटी पैदा होगी जो समुद्र और नदी को भी जोड़ेगी। उसके तहत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने
माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने चौथी मुंबई की घोषणा की है, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि डेवलपमेंट बहुत जोर से होने वाला है। एयरपोर्ट भी पालघर जिले में आ रहा है, तो ये सब हम देखे जाए तो एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करीब 10 लाख के ऊपर होने वाले हैं। जो पालघर में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से जो माल पैदा हुआ, गुड्स पैदा हो गए, एमएसएमई है, फिशिंग बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एग्रीकल्चर के तहत जो गुड्स पैदा होते हैं, चीकू है, कोकोनट है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, उसके लिए ये सब लैंडिंग बिल का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छा साबित होगा। काफ़ी सारे फिशरमैन वहाँ पे है जो उनके अधिकारों का संरक्षण चाहते हैं। काफ़ी बार सरकार ने उनसे बात की है और काफ़ी विश्वास पैदा हुआ है। फिशरमैन सोसाइटी को और अधिकार और संरक्षण होना चाहिए, उनको सक्षम करना चाहिए, उनको जो उनके तहत जो बोट लेते हैं उनके लिए और सॉफ्ट लोन हमें और देना चाहिए, जिसके लिए वो भारी मात्रा से फिशिंग कर पाएंगे। मछुआरों के अधिकारों का संरक्षण भी हमारी सरकार कर रही है और इसीलिए जो फिक्स्ड नेट है, फ्लोइंग नेट के माध्यम से जो फिशिंग होती है उसके बारे में हमें और सोचना चाहिए। जो धूप प्रतिबंधक बंधारे होते हैं, जो बड़ी वॉल बनने वाली है, जिसके लिए वाटर फ्लो है वो काफ़ी हद तक चेंज होने वाला है, जिसके लिए स्टोन्स, रॉक्स के माध्यम से और टेट्रापॉड के माध्यम से जो धूप प्रतिबंधक बंधारे बनने वाले हैं, जिसके लिए भारी मात्रा में फंड लगने वाली है, वो हार्बर देगी। तो हार्बर को हम अगर सक्षम करेंगे तो पूरा कोस्टल एरिया हम धूप प्रतिबंधक बंधारे से कर पाएंगे। इनलैंड फिशिंग काफ़ी मात्रा में होती है, उसको भी हम एनकरेज करना चाहिए। फिशिंग एरिया जो अभी वाडोम पोर्ट के से अफेक्ट होगा, वो अगर हम इंक्रीज कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से फिशरमैन को काफ़ी आसानी होगी। जो नए बोट हम अगर दे पाएंगे तो उस पर जीपीएस ट्रैकिंग और टेक्नोलॉजी युक्त अगर रहेगी तो काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। काफ़ी सारी जेटीज़ की डिमांड है, तो जेटीज़ हमें बनवानी चाहिए। जो फिशरमैन को और कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स चाहिए, उसके लिए भी प्रावधान हमारी सरकार कर रही है। काफ़ी सारे जो कोस्टल एरिया में जो गांव है, वहाँ के सब 12th और 10th पास और ग्रेजुएट जो पास लड़के लड़कियाँ हैं, उसके लिए काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर्स जो है, अगर जो प्रभावित एरिया है उसके और नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर्स अगर हम किए तो मेरे ख्याल से और हमारी जो फिशिंग है वो वैसे की वैसे रहेगी। और जो नंबर ऑफ विलेजेस जो अफेक्ट हो रहे हैं वो काफ़ी कम है, उसमें और हम जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे और ज़्यादा विलेज इंक्लूड किए जाए तो मेरे ख्याल से वहाँ पे अच्छा और फिशिंग और वहाँ पे विश्वास पैदा होगा। मेरे ख्याल से आज का जो लैंडिंग बिल है वो उसका मैं स्वागत करता हूँ, और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इंडिया पालघर है, वो सब उसके नागरिक और फिशरमैन उसको हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Through V. Selvaraj, Honorable Urupinar, please. அன்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, வணக்கம். என்னை பேச அழைத்தமைக்கு நன்றி. பில் ஆஃப் லேண்டிங் என்று சொல்லுகிற இந்த கடல்சார் வர்த்தகம் மசோதாவிற்கு சில ஆலோசனைகளை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு என்ற ஒரு முதுமொழி உண்டு. அதேபோல எனக்கு முன்னாலே பேசிய சக உறுப்பினர் சகோதரர் கலாநிதி வீராசாமி அவர்கள் சொன்னது போல, வெள்ளி பனிமலையில் மீது உலாவுவோம், அடி மேலே கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம் என்று பாரதி பாடியிருக்கிறார். அதேபோல இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழனாக பிறந்து போராடிய கப்பலோட்டிய தமிழனுக்கு மிகச்சிறந்த வரலாறு உண்டு. அவர் விட்ட அந்த கப்பலில், அந்த சுதந்திரத்திற்காக விடப்பட்ட அந்த கப்பலில் காங்கிரஸ் கொடி, கம்யூனிஸ்ட் கொடி, முஸ்லீம் லீக் கொடி 3 மட்டும் பறந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு பின்புலத்தை தமிழர்கள்
வலுவான இந்திய பொருளாதாரத்தை உறுதி செய்வதற்கான புதுமையான யோசனைகளாக டிஜிட்டல் வர்த்தக தளங்களை மேம்படுத்துதல், இந்தியாவின் பெரிய ஐடி துறையை பயன்படுத்தி உற்பத்தியாளர்களையும் நுகர்வோரையும் உலகளவில் இணைக்கும் மின் வணிக தனங்களை உருவாக்கி இணைத்தல், கடல்சார் ஏற்றுமதியை வலுப்படுத்துதல், முக்கிய சர்வதேச மையங்களுக்கு கப்பல் இணைப்பை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துதல், குறிப்பாக தொழில்நுட்பம் மற்றும் மருந்துகள் போன்ற உயர் மதிப்புள்ள துறைகளில் பொருட்களை விரைவாக கொண்டு செல்வதை சாத்தியமாக்குதல், உற்பத்தியில் புதுமைகளை ஊக்குவித்தல், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் உயரி தொழில்நுட்பம் போன்ற வளர்ந்து வரும் துறைகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான ஊக்கத்தொகைகளை வழங்குவதன் மூலம் உயர் தொழில்நுட்ப உற்பத்தியை ஊக்குவித்தல், தொடக்க நிறுவனங்கள் மற்றும் எஸ்எம்இ-க்களுக்கான ஆதரவு, தொழில் முனைவோரை ஊக்குவிக்க தொடக்க நிறுவனங்கள் மற்றும் எஸ்எம்இ-க்களுக்கு மானியங்கள், வரி தள்ளுபடிகள் மற்றும் வணிகம் செய்வதை எளிதாக்கும் அரசாங்க கொள்கைகளை செயல்படுத்துதல், 2/3 நகரங்களில் உள்கட்டமைப்பு விரிவாக்கம் பொருளாதார வளர்ச்சியில் பிராந்திய ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைக்கவும், தேசிய விநியோக சங்கிலி செய்த செயல்திறனை மேம்படுத்தவும், வளர்ச்சியடையாத பகுதிகளில் தளவாட மையங்களை உருவாக்குதல், இந்த முயற்சிகள் வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்துதல், புதுமைகளை ஆதரித்தல் மற்றும் உலக அரங்கில் போட்டித்தன்மையை மேம்படுத்துவதன் மூலம் பொருளாதார வளர்ச்சியை தூண்டுதல் என்கிற ஆலோசனையை நான் சொல்லிக் கொள்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதேபோல எங்களுடைய தொகுதியாக இருக்கிற நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்திலிருந்து கடந்த காலத்தில் சோழர் காலத்திலிருந்து மிகப்பெரிய வணிகம் நடைபெற்றுள்ளது. இலங்கைக்கு வணிகம் நேரடியாக நடைபெற்றுள்ளது. இப்போது இருக்கிற எங்கள் நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக கப்பல் போக்குவரத்து இலங்கைக்கு இன்றைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. சுபம் கேரியர்ஸ் என்கிற நிறுவனம் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை மேம்படுத்த வேண்டியதோடு சரக்கு போக்குவரத்தையும் தொடங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதற்கான ஆலோசனை கூட்டங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நடந்திருக்கிறது. குறிப்பாக துறைமுகத்தை ஆழப்படுத்த வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை இருக்கிறது. விமான போக்குவரத்திற்கு எக்கனாமிக் அந்த பிரிவிற்கு 5%, பிசினஸிற்கு 12% ஜிஎஸ்டி வரி போடுகிறார்கள். ஆனால் கப்பல் போக்குவரத்திற்கு 18% வரி போடுகிறார்கள். ஆக வர்த்தகத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை 5% ஜிஎஸ்டி வரியாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தை 5 மீட்டர் ஆழமும் 300 மீட்டர் முகத்துவாரத்தை அமைக்குவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். சமீபத்தில் எங்களுடைய தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் எங்கள் மாவட்டத்திற்கு நாகப்பட்டினத்திற்கு வருகை தந்தார். மிக கவலையோடு சொன்னார் தமிழ்நாட்டு மீனவர்களை பற்றி, அவர்கள் படுகிற பாட்டை பற்றி. அதிலே கடந்த இந்த ஒன்றிய அரசு பதவியேற்ற 10 ஆண்டுகளில் 3656 மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். 611 படகுகளை அவர்கள் இன்றைக்கு மீட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். மீனவர்கள் மீது 736 முறை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இதற்கு என்ன நடவடிக்கை? தமிழ்நாட்டு மீனவர்களை எப்படி இந்த அரசு பார்க்கிறது? தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் என்று பார்க்கிறார்களா அல்லது இந்திய மீனவர்கள் என்று பார்க்கிறார்களா? தமிழ்நாடு என்பது இந்திய நாட்டில் தானே இருக்கிறது. ஏன் இந்த பாரபட்சமான அணுகுமுறை இந்த அரசு செய்கிறது? இப்படி செய்யக்கூடாது. இப்படி செய்கிற ஒரு வெறுப்பு அரசியலை முன்வைக்கிற பாரபட்சமான அணுகுமுறையை பார்க்கிற இந்த ஒன்றிய அரசின் மீது நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன். கண்டிப்பாக இதிலிருந்து மீளுவதற்கு இலங்கை அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தமிழக மீனவர்களை பாதுகாப்பதற்கு அனைத்து விதமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு மீண்டும் தலைவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री आनंद भदौरिया। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस सदन में आज वहन पत्र विधेयक 2024 पर चर्चा करते हुए सरकार के दृष्टिकोण पर अपनी समालोचना प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह बिल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में आने वाले बदलावों, माल वाहन समझौतों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को संबोधित करता है, लेकिन इसके कई प्रावधान ऐसे हैं जिसमें व्यापारियों को और विशेष रूप से जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें आयात और निर्यात के क्षेत्र में वो भी प्रभावित होंगे, कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग जब बोल रहे थे और माननीय मंत्री जी ने जब इस विधेयक को प्रस्तुत किया था तभी उन्होंने कहा था कि कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर के हम लोग नहीं आए।
ये 1856 में जो ये विधेयक आया था, उसके बाद कुछ खास परिवर्तन इसमें नहीं किया। अगर ये कहें कि वही नई बोतल में पुरानी शराब है, आपने उसी विधेयक को केवल साल बदला है, इसके प्राविधानों में कुछ खास आपने बदलाव नहीं किया है। आदरणीय दुबे जी कह रहे थे पोर्ट की चर्चा, बड़े जोर शोर से पोर्ट की चर्चा कर रहे थे कि ड्रग्स गुजरात के उस एयरपोर्ट पे पकड़ा जा रहा है। आपने चर्चा कई बार की, जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि एक खास एयरपोर्ट पर, एक खास व्यक्ति के द्वारा संचालित एयरपोर्ट पर ही बार बार ड्रग्स क्यों पकड़ा जा रहा है। जरा इस पर भी अपनी चिंता व्यक्त कर देते। आपने वहन पत्र में जो दावों का समाधान का जो आपने अमेंडमेंट लाए हैं, इसके तहत माल के नुकसान या विलंब से संबंधित दावों का समाधान केवल एलिजिबल पार्टियों के बीच किया जाएगा। यह निर्धारित करने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है, इसमें कई बार छोटे व्यापारियों की अनदेखी हो सकती है। सभापति महोदय, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में एक रूपता की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पूरी विधेयक पूरी तरह से एक रूप नहीं है। विश्व स्तर पर समुद्री व्यापार में कई देशों में अलग अलग नियम और प्रोटोकॉल लागू हैं। क्या इस विधेयक में सरकार ने भारत के लिए कोई स्पष्ट दिशा तय की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो? और साथ ही साथ सभापति महोदय, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इस बिल में कोई प्राविधान नहीं किया है। आज के समय में जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं और उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, तब सरकार ने इस वहन पत्र में उस विधेयक को बिल्कुल नजरअंदाज किया है। क्या सरकार ने माल वाहन से संबंधित प्रदूषण, अन्य पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार किया है? क्या इसमें कोई प्राविधान है जो समुद्री व्यापार के पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित कर सके? अच्छा होता कि सरकार इसके लिए भी कुछ प्रयास करती। और जो श्रमिकों की अधिकारों की अनदेखी हो रही है सभापति महोदय, इस बिल में माल वाहन उद्योग से जुड़े श्रमिकों के अधिकारों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। लाखों लोगों को रोजगार यह क्षेत्र प्रदान करता है, लेकिन उनके अधिकारों की सुरक्षा पर कोई ठोस पहल नहीं की गई। क्या सरकार ने इस क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम उठाया है? इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक में आवश्यक सुधार किए जाएं ताकि ये हमारे व्यापारिक समुदाय और श्रमिक वर्ग के लिए एक सशक्त और समान अवसर प्रदान करे। साथ ही साथ एक बहुत पुरानी योजना नदी जोड़ो योजना सरकार की थी। एनडीए सरकार में नदी जोड़ो परियोजना पर कुछ काम शुरू हुआ था। हमारी सरकार से मांग है, इसलिए नदी जोड़ो परियोजना पर सरकार काम शुरू करे। और नदी जब जोड़ेंगे, नदियों को जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर प्रदेश है, हमारे यहां तो कोई पोर्ट है नहीं, इसलिए नदियों को जोड़ेंगे तो हो सकता है कोई पोर्ट उत्तर प्रदेश को, बिहार को भी मिल जाए, जिससे सारी नदियों को जोड़िए, जिससे कोई पोर्ट बन जाए। और पोर्ट बनेगा तो हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को, गरीबों को, श्रमिकों को, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इसलिए सभापति महोदय, आपने मौका दिया, आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Minister. Respected Sir, today I am especially thankful to all the Honourable Member of Parliament who took part in this particular discussion of the bill. Especially Mohammad Said, Vishnu Prasad Tarai, Pratima Mandal, Kalanidhi Bharaswamy, Alok Kumar, Mathu Kumili, Sri Bharat, Virendra Singh,
अरविंद गणपत चौहान, रविंद्र दत्ताराम वेकर, भास्कर मुरलीधर भगारा, कैप्टन पेरियाटो फर्नांडोस, अभिजीत गंगोपाध्याय, गुरुमूर्ति मदिला, एडवोकेट चंद्रशेखर, डॉक्टर प्रदीप कुमार पनिग्राही, ससीथा नंथन आर, राजा राम सिंह, एन.के. प्रेमचंदन, निशिकांत दुबे, सुप्रिया सोले, अनिल देसाई, दर्शन सिंह चौधरी, सुगत रॉय, हनुमान बेरीवाल, विशाल दादा पटेल, हेमंत विष्णु शर्मा, Salvaras V. Anand Bhaduria. So I am thankful to everybody. And this bill, as you have already, with your limited understanding, you have expressed your views. So, but let me tell you, हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, उसी विजन को साकार करने के लिए आज देश में विकास के सिलसिले में जनता एकत्रित होकर लगी हुई है। जो मंत्र हमें परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने दी है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, उसी नीति के आधारित आज आप लोगों ने देखी है कि कैसे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाया गया और जिसकी वजह से देश आज विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगे। ये जो हमने आज बिल लाया, आप सबके सहयोग चाहते हुए इस बिल 168 इयर्स ओल्ड, एक पुराना कानून, जिस समय पे ब्रिटिश का राज थे, उसी कालखंड में अलग अलग देश में उसी देश का नाम के आधारित उन्होंने कानून व्यवस्था प्रस्तुत की। तो आज हमारी स्वतंत्रता मिलते हुए आप लोगों ने देखा है कि 78 इयर्स हुई है और 76 इयर्स एक रिपब्लिक होने के नाते हमें जो स्वीकृति मिली है, तो इस कालखंड में सबका ही मानना है, हर भारतीय का ही स्वाभिमान का सोच है कि हम स्वतंत्र भारत की कानून व्यवस्था लागू करें। इसलिए प्री इंडिपेंडेंस जो स्टैट्यूट है, उसका रिप्लेसमेंट और रिपील के लिए आज इस बिल लाया गया है। और इस बिल में हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स है, खास करके शिपर एंड कैरियर्स, सभी स्टेक होल्डर का साथ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद और जो लीगल एक्सपर्ट है सभी का साथ डिटेल चर्चा करने का बाद इस बिल को इस रूप में आप लोगों का समक्ष पे रखा गया है। तो इस बिल में खास करके हम लोगों ने जो सिंप्लीफाई की है, ताकि ये जब अंडरस्टैंडिंग बने, जो स्टेक होल्डर है उनके लिए समझ में कोई कठिनाई ना हो। और इसमें खास करके जो क्लॉज 5 में केंद्रीय सरकार को डायरेक्शन इश्यू करने के लिए जो भी प्रोविजन रखा गया है, इसका मूल लक्ष्य है हमारे जो भी स्टेक होल्डर है वो किसी भी हालत में दिक्कत में ना पड़े। और आज जो आधुनिक जगत है, एक ऐसी शादी है
बढ़ते हुए चैलेंजेस के साथ और परिस्थितियों को साथ मुकाबला करने के लिए आधुनिक कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए ये फ्यूचरिस्टिक एक स्टैट्यूट है, क्योंकि अगले दिनों में जरूरत के मुताबिक टू फैसिलिटेट द स्टेक होल्डर्स प्रॉपरली वी हैव टू make the provisions. That is why this clause 5 has been brought. मैं आपको जो हमें सवाल की है उसी हिसाब से मैं आप लोगों को भी आपकी सवाल की जवाब देना चाहता हूं। जैसे मोहम्मद सईद जी ने जो कैरियर्स ऑफ गुड्स बाय सी बिल के बारे में उल्लेख किया, मैं कहना चाहता हूं दिस बिल बीइंग डिस्कसेस इज द बिल ऑफ लेडिंग बिल, नॉट द कैरियर्स ऑफ गुड्स बाय सी बिल। द बिल्स ऑफ लेडिंग बिल रिलेट्स टू द ट्रांसफर ऑफ राइट टू सूट एंड लायबिलिटीज टू कंसाइनीज एंड एंडोर्सी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। और प्रतिमा मंडल जी का जो सवाल थे उसी सवाल को मैं जवाब देना चाहता हूं। द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर क्लॉज 5 इज लिमिटेड टू इशूइंग डायरेक्शन फॉर कैरिंग आउट ऑल और एनी प्रोविजंस ऑफ द बिल। दिस पावर इज एन एनेबलिंग प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू ओनली द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। द बिल डज नॉट सीक to sense any existing provisions of the Indian Bill of Lading Act, which have been substantively retained in the bill with simplification of language. Therefore, the bill will not result in investor uncertainty. Since the bill only relates to transfer of right of suit and liabilities to consignee and endorsees, it does not relate to regulation of port and does not exclude state. ये जो आपका मन में जो शंका थी, इसी शंका का मैं जवाब दे रहा हूं। कलानिधि जी का जो सवाल थे उस सवाल के जवाब में द बिल ऑफ लेडिंग बिल will not result into legal recognition of e-bill of lading. The bill of lading bill does not provide any legal recognition to e-bills of lading, which will require a detailed framework. Wide consultation का जरूरत है। अगर इसको लाना है स्टेक होल्डर का साथ कंसल्टेशन जरूरी है, और आईटी का है और फाइनेंसिंग लाइक जो भी इंस्टीट्यूशन है डिटेल में सर्वेक्षण करना होगा। जब मत बनेगा तब इसको इसी हिसाब से लाया जाएगा। एज इट इज एविडेंट फ्रॉम द current legal framework in other common law countries such as Singapore and United Kingdom that have come up with a separate legislation that provide for the legal recognition of e-bill of lading. और वीरेंद्र जी ने भी जो सवाल की है, द बिल ऑफ lading bill only relates to the transfer of right, पहले भी मैं बोल चुका हूं, of suits and liabilities to consignees and endorsees. It relates to the contract of carriers between shipper and carriers, nor does it relate to safety of vessels. Therefore, issues such as insurance and freight are not relevant to this bill. Sir, the bill अरविंद गणपत जी का जो है सवाल, द बिल अंडर कंसिडरेशन इज द बिल ऑफ लेडिंग बिल, नॉट द कैरियर्स ऑफ गुड्स बाय सी बिल। सेम क्वेश्चन ही ऑल्सो रिपीटेड। द गुरुमूर्ति जी का जो सवाल था, इस सवाल का जवाब यही है कि द बिल डज नॉट रिलेट टू मेजर पोर्ट्स फॉर व्हिच अदर स्टैट्यूट एग्जिस्ट। और हमारे माननीय ससिथा नंथाम जी का जो थे
The bill of lading only relates to the transfer of right of suit and liabilities to consignees and endorsees. The bill neither relates to the contract of carriers between shipper and carriers, nor does it relate to the safety of the vessel. Therefore, issues such as freight are not relevant to the bill. N.K. Ramasandan ji ka jo thi, it will bring the law out of their pre-colonial mindset. That is the argument. Also, some new provisions have been added which are important for the smooth implementation and enforcement of the provisions of the bill, which did not exist in the 1856 Act. This is in line with the modern legislative drafting practices which will lead to a smooth implementation of the law. The power of the central government under Clause 5 is limited to issuing direction for carrying out all or any provisions of the bill. This power is an enabling provision with respect to only the provision of the Act. It is limited to the provision of the Act. Devising a detailed legal framework and the overall architecture for recognition of e-bills of lading needs a wide range, as I have already said. सुप्रिया जी का और अनिल देसाई जी का जो सवाल थे, the power of the central government under clause 5 is limited to issuing direction, as I have said already. Recognition of e-bills of lading needs a wide range of stakeholder consultation. The bill deals with specific aspect of right and liabilities emanating from the transfer of bill of lading to a consignee or an endorsee. The bill of lading is a legal document, not a contract. It's a legal document. It is only evidence of a contract. It is evidence of a contract, not a contract. The right and liabilities provided for are not directly emanating from the contract, but from the transfer of the evidence of the contract. Therefore, the bill does not contain any provision on dispute resolution or appellate mechanism. Captain Viriato Fernandez, the aspect of shipping and carriage of goods by sea raised are governed by other statute. Merchant shipping is governed by the Merchant Shipping Act 1958. Ports, state maritime boards, major port authorities are governed by other statute. This bill only relates to bill of lading. The provision of the bill are not subject to the quantity or nature of goods being shipped. So these are the kind of, response as you wanted to know from my side. And for your information, let me tell you, this legislative reforms is giving a very, very important kind of boasting to the stakeholders, particularly those who are involved in this particular trade, maritime trade, because we are to create an ecosystem which will provide them ease of doing business environment, and particularly clarity of the legislation. If they have the clarity of the legislation, then definitely they could also put their report with full of confidence. So that is why Honorable Prime Minister's vision is always helping the nation to grow faster. And whatever reforms so far have been brought to the country in the different ministry you have seen, in my ministry, if I want to glorify the success story, it will take hours. Since 2014, whether it is Sagarmala program or Maritime India Vision 2030 or Amritkal Vision 2047, in every sector you have seen what are the exemplary initiatives under the Honorable Prime Minister's direction and vision is taking place. As a result, it is giving a lot of boost and also for the faster growth of our economy. Just I want to cite out one example. International waterways.
Up to 2014, let me tell you one example, very exciting. This particular act was enacted in 1986, and since then, up to 2014, there were only 3 operational national waterways in the country. Altogether 5, but operational were only 3. As a result, and also the kind of infrastructures growth and also the growth of the national waterways, whatever effort during that time the respective government has taken is meager, only 1,480 crores something. But that is almost 1986 to 2014. You just count the years. But in the last 10 years, if you look at, you will see total expenditure in this sector for the making of the infrastructure facilities in the different national waterways. It is more than 5,000 crores. And the cargo handling capacity, that time it was limited to 18 million metric ton per annum, up to that moment. But in the last 10 years, it went up to 133 million metric ton. So that is the good story, success story in this particular sector. And look at the shipping and port, modernization, mechanization, digitization in the port sector. You have seen now JNPA has improved its capacity of container handling up to 10 million. First container handling port in the country who has attained this particular level of success. So this is happening only because of the Honorable Prime Minister's vision, honestly speaking. So there are many other ports coming up, even Paradip, Kandla, they are all going to become the mega port because of the cargo handling capacity increasing in a very faster mode. Of course, there are private and Vizhingham is also coming up. These are in the private sectors, in the public sectors, then it's like port run by the state government, state maritime board, everywhere. The success story now creating special encouragement to the people of the country, and they are generating confidence in the mindset that yes, this country become self-sufficient, self-reliant, Atmanirbhar Bharat, and by 2047, no doubt about it, is going to be one of the top developed nation in the world. Thank you. Very good. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रोफेसर सौगत राय जी, संशोधन संख्या 3। Yes, sir. My amendment is in page 2, lines 6 to 11. Substitute every consignee of goods in a bill of lading or every endorsee of a bill of lading to whom the property in the goods therein mentioned referred shall pass to any individual or entity named as the recipient of goods or anyone who has been legally transferred ownership of the bill of lading through endorsement, essentially giving them the right to claim the goods therein mentioned, shall be subject to the same liabilities in respect of such goods as if the contract contained in the bill of lading has been made with such consignee or endorsee. This is just to make the bill more transparent. I move the amendment. प्रश्न ये कि सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें।
मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवा संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2। Yes. Sir, I move to amendment number 2. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1। I move amendment number 1. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने। प्रश्न ये कि उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। आप एक मिनट मंत्री जी। निशिकांत जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिपिंग सेक्टर ने बड़ा काम किया, इसके लिए मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। लेडिंग बिल में 2 पैरामीटर है सर, निगोशिएबल और नॉन निगोशिएबल। जापान नॉन निगोशिएबल है, चाइना जो है निगोशिएबल है। हमने भी इनलैंड वाटरवेज के तौर पर हमारे यहाँ झारखंड में जो है साहबगंज में एक मल्टी मॉडल हब आया है। मंत्री जी के भी यहाँ क्षेत्र में जो है वो ब्रह्मपुत्रा, चूंकि पहले से उसका शिपिंग करता रहा है, तो वो आसाम में भी जो है एक मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, जिससे कि नेपाल और भूटान को हम इस तरह की लैंडिंग फैसिलिटी दे पाए। तो मंत्री जी बताएंगे कि ये जो ब्रह्मपुत्रा वाला है और जो साहबगंज वाला है, ये दोनों कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा, और निगोशिएबल और नॉन निगोशिएबल का जो लफड़ा है वो कब तक हम लैंडिंग बिल में खत्म कर पाएंगे? देना चाहे तो। मान्य अध्यक्ष जी, माननीय निशिकांत दुबे जी ने जो भी उन्हें आग्रह किया है, इसको विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। I move that the bill as amended be passed. प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 11 मार्च 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।